Yes, Ria, please take lead and turn on your camera if possible. Am I audible, sir? Yes, you're audible. Please go on. Good afternoon to respected sir and all my dear fellow mates present over here. Myself, Riya Chakraborty, on the behalf of Dia Delhi, welcome you all on another class of science and technology by our respected, amicable, and energetic teacher, Neeraj Nachiketa sir. Let us begin our class with a positive quote that is, stay away from those people who try to disparage your ambition. Small minds will always do that, but great minds will give you a feeling that you can become great too. So believe in yourself and the rest will fall into place. Have faith in your own abilities, work hard, and there is nothing that you cannot accomplish. With this, I would like to request sir to please further proceed the class. Thank you. Over to you, sir. First of all, namaskar and good afternoon, and thank you, Ria, for introduction session. So I hope you all are doing well. So what I'll do right now, yesterday I've discussed about Aditya mission, right? So I have a question for all of you. Let me see, um, कौन बनेगा civil servant, KBC. So there I'm asking a question here. Suppose that you get a question in the exam of this one. Which of the following statements is are correct about Aditya L1 mission? Right. Number one, ISRO is the third agency in the world to study sun by sending spacecraft to Lagrangian point 1, L1. Second statement, ISRO will insert the spacecraft into halo orbit around L1. Third statement, L1 point lies 1.5 million kilometers from Earth. Fourth statement, L1 point lies between Sun and Earth. And the fifth statement, the spacecraft carries 7 instrument payload. Now, which of the above 5 statements is correct? Any of the 2 statement, any 3, any 4, all 5. So what will be answer? मान लीजिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आदित्य L1 के बारे में 5 ऐसे वाक्य या कथन दिए हों, सेंटेंस दिए हों, और आपसे पूछा जाए कि ऊपर में से कौन सा सही है, कोई 2 है, कोई 3 है, कोई 4 है या कोई 5 है, तो क्या इसका उत्तर होना चाहिए? व्हाट कुड बी द आंसर हियर? कल मैंने क्लास में बताया था, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स देयर. आई कैन सी योर चैट बॉक्स. ऑल 5, ओके, ठीक है. मेनी ऑफ यू आर गिविंग ऑल 5. ऑल राइट, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड यस्टरडे, है ना? कल मैंने क्लास में डिस्कस किया, पूरे डिटेल में मैंने बताया. दैट्स गुड, वेरी गुड. वेरी वेरी गुड. आई एम गेटिंग ऑल द आंसर हियर. वेरी गुड, गुड, कीप इट अप. तो आप सबको पता है अभी नाउ, थर्ड एजेंसी है ESA and NASA. After that, India comes there, and again, hello orbit, we are already inserted there, and then again, 1.5 million kilometers or 15 lakh kilometers from Earth, and between Sun and the Earth, and 7 instruments. So that's good. You already have given the correct answer there. So your answer is correct there. This is just a part of the question I have given here. So that's what you need to be there. Now, what I would like to add here, once you say Hindu paper, the Hindu paper, when you read, whether e-paper or normally hard copy there, you must always take care that any science and technology topic which is there, उसके जो मेन पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो आपको हमेशा ध्यान रखना है. और डिपेंडिंग ऑन विच एरिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो आपको मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, PIB वहां से पढ़ना है, राइट? तो कई बार करंट अफेयर्स में ये सारे कवरेज होते हैं, तो उसको आपको प्रयास करना है कि वो आप उसको अच्छे से पढ़ लें वहां. ठीक है, तो जैसे हिंदू पेपर आता है, ई-पेपर वगैरह जो है, वो सारी चीजें उसको ऑलवेज आपको ध्यान में रख के करना है वहां पर. ठीक है, तो व्हाट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, जो सबको यहाँ पर ये ध्यान रखना है ना? तो मैं कुछ सैंपल आर्टिकल में लूंगा. मैं I'll take certain sample article so that you are able to understand here, right? I'll go to get into that one. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कल मैंने बताया था जो है, India has gone so far with so many new development there, right? We have now Astrosat, we have Exposat, we have covered a lot of journey right from after independence till now.
वी हैव गॉन इनटू सो मेनी एरियाज देयर, राइट। बहुत सारी चीजों को हमने हासिल किया है। तो इसमें ये हमेशा याद रखना है कि कोई भी नया डेवलपमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कुछ भी अगर आप पढ़ने को आता है तो आपको उसको अच्छे से तैयार करना। अब जैसे कि कुछ मैं एक सैंपल लेता हूं, देन आई विल गेट बैक टू स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लाइक फॉर एग्जांपल, recently there was a news. Let me share that. Just one example I'm taking here. This one, Fukushima plant, है ना, Japan releases radioactive water after treatment into the sea and ocean from Fukushima plant. अब जैसे ये आर्टिकल है ना, ये जो आर्टिकल है ये ऑलरेडी पुराना आर्टिकल है, लेकिन जब आप ऐसे आर्टिकल पढ़ते हो आप, राइट, उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कैसे कनेक्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको कनेक्शन कैसे करना है, उसको कनेक्ट करके कैसे आप लिंक करते हो, और इसमें इन केस द क्वेश्चन कम्स इन द एग्जाम तो उसको कैसे करना है। तो पहला ये चीज क्या है कि ये एक इवेंट फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात है, राइट। तो यहाँ पर एक चीज ये जो कि हमेशा न्यूज में हो, फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट 2011 है ना, 2011 सुनामी एंड अर्थक्वेक, डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन फुकुशिमा, राइट, मेट विद एक्सीडेंट, न्यूक्लियर एक्सीडेंट की बात है। अभी क्या डिसीजन हुआ है कि जो उसके रेडियो एक्टिव वाटर जो थे, कूलेंट वाटर जो वहां रखा हुआ था उसको डिस्चार्ज करने के लिए, उसमें चाइना चाइना हैज अपोज्ड, बिकॉज सच रेडियो एक्टिव वाटर विच विल गो टू दी सी, इट में अफेक्ट मरीन लाइफ। तो इन्वायरमेंट से लिंक्ड है वो कि मरीन लाइफ होगा, हेल्थ इंपैक्ट से लिंक्ड है क्योंकि जब उसको खाया जाएगा, अगर कोई ऐसा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस फूड चेन में एंटर करता है, राइट, एक टॉपिक होता है बायोमैग्निफिकेशन कि व्हेन इट एंटर्स द फूड चेन, तो व्हाट अबाउट द सच काइंड ऑफ रेडियोएक्टिव फिश ईटन बाय मैन, तो व्हाट टाइप ऑफ हेल्थ इंपैक्ट कुड बी देयर। तो अब यहाँ पे जैसे फ्यूरियस चाइना जो डिसाइड टू बैन सी फूड जो है, अब यहाँ पर ये चीज है क्वांटिटी दिया हुआ है, तो क्या ये क्वेश्चन ये उठता है कि इतना ज्यादा जो पानी है 540 ओलंपिक स्विमिंग पूल के बराबर, क्या ये इंपॉर्टेंट है याद करना? ये इंपॉर्टेंट नहीं है याद करने के, दिस इज नॉट रेलेवेंट। रेलेवेंट ये है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट, द एक्सीडेंट और जो उसका इंपैक्ट इन्वायरमेंट पे है वो इंपॉर्टेंट है। हाउ मच इज द क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव वाटर आफ्टर ट्रीटमेंट विल बी डिस्चार्ज इनटू द सी, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर क्या आता है, ऐसे आर्टिकल जब आप पढ़ते हो, अब ये चीज है न्यूक्लियर एक्सीडेंट, है ना, फिर जापान, ये जो वेस्ट वाटर आता है, जापान ये कह रहा है कि अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज, यूएन एटॉमिक वॉच डॉग, यूनाइटेड नेशंस न्यूक्लियर वॉच डॉग, अब यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, विच लुक्स इनटू न्यूक्लियर डेवलपमेंट, न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलपमेंट वर्ल्ड वाइड। कई बार आपने ये देखा होगा कि प्रीलिम्स एग्जाम में, है ना, ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम किसको देखता है? न्यूक्लियर प्रोग्राम को देखता है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज IAEA, व्हाट इज द वर्क ऑफ IAEA, राइट, वो पार्ट आता है। फिर देन इट गोस देयर कि ये जो वार्निंग जो दिया गया सी फूड का जो है, तो वो पार्ट ऑफ फूड इंपोर्ट का जो है, दैट वाज आर्टिकल। अब जैसे ये चीज है चंद्रयान रोवर जो है ना, ये न्यूज में था मंथ ऑफ अगस्त, ये 25 अगस्त का आर्टिकल है, लास्ट ईयर का आर्टिकल से, जब चंद्रयान को और विक्रम लैंडर को जब लैंड किया गया था, दैट टाइम का यहाँ पर है, ठीक है। तो उस समय जो आर्टिकल है, अब ये था आवर्स आफ्टर प्रज्ञा लूनर रोवर जो है, तो ये आप सबको पता है प्रज्ञा रोवर जो है इसरो चंद्रयान 3 का, और प्रज्ञा रोवर कहाँ था? विक्रम लैंडर के अंदर था, इट वॉज विद इन द विक्रम लैंडर। तो ये कब आर्टिकल आया था? जब 25 अगस्त को फर्स्ट वॉक, जब पहली बार प्रज्ञा विक्रम रोवर से, विक्रम लैंडर से बाहर निकल के हैज गॉन इनटू दैट। और आपको पता है कि इन द मंथ ऑफ सितंबर मेंस एग्जाम हुआ था, इन सब यूपीएससी कंडक्टेड मेंस एग्जाम, और GS3 पेपर में क्वेश्चन पूछा गया हो जाता है कि जब आप इसको पढ़ते हो आप किसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और मेन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ना,
अगर आप GS3 का पेपर देखते हैं, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, चंद्रयान 3 मिशन का। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, ये चीज है, मून्स मिनरल कंपोजिशन, है ना, सिज्मिक एक्टिविटी, अर्थ हैज गॉट अर्थक्वेक, तो मून ऑल्सो हैज गॉट मूनक्वेक, है ना, प्लेट टेक्टोनिक जो मूवमेंट होता है ना, एक्टिविटीज इन एटमॉस्फेयर। फिर यहाँ पर क्या है, ये चीज है, क्या लिखा हुआ है, प्रज्ञा रोवर ऑफ द लूनर सर्वे बिगेन अ डे आफ्टर इंडिया बिकेम फोर्थ कंट्री। अब देखो आप, इंडिया बिकेम द फोर्थ कंट्री, ठीक है। अब इंडिया फिफ्थ कंट्री बन गया, अब इंडिया क्या है, फिफ्थ कंट्री है। ये कब का आर्टिकल है, इंडिया इज नाउ द फिफ्थ कंट्री। वाई फिफ्थ कंट्री, जापान, है ना, जापान जो है, जापान हैज आल्सो टेकन द लीड। तो आपको वो देखना होता है करंट कॉन्टेक्स्ट में, आपको उस समय अपडेट होना होगा, यू हैव टू बी अपडेटेड कि विच ऑफ कंट्रीज आर देयर, है ना। एंड यहाँ पर ये चीज है, तो दैट इज व्हाट कम्स हियर, देन यू विल फाइंड हियर दिस वन, ये जो है चंद्रयान 3 रोवर, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि मेड इन इंडिया चंद्रयान 3 रोवर जो है, तो वहां उसके बारे में दिया हुआ है, तो दैट्स व्हाट कम क्रॉस। फिर उसी टाइम पे ये भी था, जो मोबिलिटी वहां पर है ना, तो प्रेसिडेंट के द्वारा इसमें मैसेज दिया गया था। अब आप देखो यहाँ पर, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल सिस्टम्स आर नॉर्मल, लैंडर मॉड्यूल पेलोड, क्या नाम दिया, इल्सा रंभा चेस्ट। अब आप ये देखो कि जिसने इस बार का लास्ट ईयर का मेंस एग्जाम लिखा होगा, those candidates who have written the mains exam, and in that question of Chandrayaan 3 would have mentioned about the name of the instruments, objectives of the instruments, they would have got the marks, है ना। तो कई बार चीजें facts, you have to remember the facts, right? It's given here, ILS Ramba and chest turned on today, that time it was in the news. Then you can see another name here, shape, SHAPE, another instrument, right? Payload on the propulsion module दिया हुआ है, राइट। तो ये चीजें आपको फिर क्या करना होता है, पढ़ना होता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इट कि व्हाट आर दोज इंस्ट्रूमेंट्स, व्हाट आर देयर ऑब्जेक्टिव्स, है ना, हम क्या पता करने के प्रयास कर रहे हैं। और जब आप आंसर लिखते हैं, व्हेन यू राइट द आंसर, दिस शुड बी रिफ्लेक्टेड देयर। सो दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से, दैट यू हैव टू ऑलवेज बी लुकिंग इनटू द करंट अफेयर्स। once you know the concept, then link with current affairs. Now look at here, Pragya that guided through this time, landing time, right? When the landing was taken, जब लैंडिंग हो रहा था विक्रम लैंडर का, तो कैमरा ऑन बोर्ड there is a camera on Vikram lander which took the photograph and the video during the landing time, right? ये सब जगह दिया हुआ है, यहाँ पर इसको यहाँ पर दिया हुआ है। अब now you see here what is given here, this one, camera developed by this laboratory for electro-optical optic system, LEOS, that was there. Now see here, lander horizontal velocity camera, right? First image was given when Chandrayaan, that 3 जो विक्रम लैंडर था वहां पर लैंडिंग के टाइम में जो है। फिर यहाँ पर देखो आप, कैमरा के बारे में दिया हुआ है, all these cameras have been talked about. So I mean to say that sometimes when you read current affairs, those facts you have to be aware. Now already UPSC asked the question, है ना, Chandrayaan 3 पे क्वेश्चन आ चुका है, already the questions has been asked in the exam. तो मैं केवल एक आइडिया दे रहा हूं कि हिंदू पेपर क्यों इंपॉर्टेंट होता है, why the Hindu paper becomes important, and whatever you reading the Hindu paper, why it becomes very important. कल मैंने क्लास में बताया था कि आपको कम से कम अपने लेवल पे इस तरह से तैयार होना होगा कि आपको न्यूज़पेपर को देखना है। इवन दोज हु आर हिंदी मीडियम स्टूडेंट हियर, जो हिंदी माध्यम के बच्चे जिन्होंने ज्वाइन किया है, इवन दे हैव टू फॉलो द हिंदू पेपर, बिकॉज हिंदू पेपर इज वन ऑफ द बेस। संडे को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पूरा पेज आता है, you'll find complete page will be given. तो ये सारा जो इसमें अब दिया हुआ है, ये चीज है। चंद्रयान मिशन की माइलस्टोन इन इसरोज जर्नी, कस्तूरी रंगन हु इज रिटायर्ड चेयरमैन ऑफ ISRO, तो वहां पर ये चीज कवर किया गया था, राइट। नाउ सी फ्लाई मी टू द मून seems to be
global ambition 2023. And you know that we have used this rocket, LBM-3 rocket, right? This is our rocket, LBM-3, but we use that. And you know that at the same time, Russia was trying with this Luna 25, which failed in landing, है ना? रशिया का लूना 25 भी उस समय था, ऑर्बिट में था, मून के ऑर्बिट में था, लेकिन लूना 25 क्या हुआ? लैंडिंग में फेल हो गया। ये सब न्यूज में था, दिस ऑल वाज इन द न्यूज। ये सारा का सारा जो है लूना 25 है ना, सफर्ड अ ग्लिच एंड क्रैश्ड ऑन द मून, अगस्त 19 का है। अब आप देखो यहाँ पर कॉमर्शियल लूनर पेलोड है ना, दिया हुआ है। अब आप देखो बाकी जो है और भी है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, कॉमर्शियल लूना CLPS और लूना ट्रेल ब्लेजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लूना ट्रेल ब्लेजर फ्रॉम द US है ना, CLPS जो है वो नासा का है, ये दोनों नासा का है। कॉमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज एंड लूनर ट्रेल ब्लेजर, ये दोनों अमेरिकन स्पेस नासा का है। देन यू कैन सी हियर अनदर थिंग हियर, एक इसी में लिखा हुआ है, ये नासा के अलावा ये चीज हाकुटो, कल मैंने बताया था हाकुटो आर लैंडर, जापान का जैक्सा, तो वो फेल्ड हो गया था लैंडिंग में, बट नाउ जापान अगेन रीट्राइड। जैसे हमारा चंद्रयान 2, इन चंद्रयान 2 वी फेल्ड इन लैंडिंग, बट देन चंद्रयान 3 वी वर सक्सेसफुल इन लैंडिंग। तो जापान अगेन ट्राइड टू लैंड ऑन द मून। तो अगर अब देखा जाए तो पूरा जो ये मिशन जो है पूरा जो है, तो अभी तक जो मून का जो मिशन है, US, रशिया, यूरोपियन कंट्रीज, चाइना, इंडिया, जापान, सो मेनी कंट्रीज हैव गॉन फॉर लूनर मिशन। तो ये सब चीजें जो है न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हो, व्हेन यू रीड अबाउट, अब जैसे चाइना का मैंने बताया था, चाइना शायद U2 रोवर, ये मैंने बताया था आपको, वेरी फर्स्ट क्लास मैंने बताया था, चैंगी मिशन, ये सब मैं बता चुका हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, वॉट एवर आई एम टीचिंग इन द क्लासरूम, दे आर ऑल बेस्ड ऑन समवेयर इन द न्यूज, कहीं ना कहीं न्यूज में रहा है और वहीं पर क्वेश्चन रहेगा। बट लेकिन मैंने क्या बताया कि इसके अलावा यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द बेसिक टर्म्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, वो पता होना चाहिए, वो बहुत जरूरी हो जाता है। आज मुझे लगा कि मैं आप लोगों को हिंदू पेपर का क्या इंपॉर्टेंस होता है, कहाँ से क्या आर्टिकल है, वो आपको पता होना चाहिए। दैट्स व्हाई आई टुक दिस डॉक्यूमेंट टू मेक यू अवेयर, है ना, ये चीज को समझाने के लिए। फिर मैंने यही बताया था इसराइल का बेरेशिट, है ना, ये मैंने बताया था। पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर वाइपर, अभी US का एक और देखो आप, वाइपर है ना, क्लेप है यहाँ पर। फिर हाकुटो 2 विच वॉज जापान सेकंड मिशन, है ना, ये सारी चीजें, चाइंगी 6 वगैरह जो है ना। अब ये जैसे ये है इंडियन एयरफोर्स का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तेजस। तो यू हैव टू फिल्टर आउट, जब आप अखबार पढ़ते हो, न्यूज पढ़ते हैं आप, तो आपको ऐसे आर्टिकल को फिल्टर करना होगा। ये इंडियन एयरफोर्स का यहाँ पर न्यूज था, सेम टाइम में उसका न्यूज था। ये हम लोग कवर करेंगे, डिफेंस टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो मेरा आइडिया ये था कि जब आप आर्टिकल पढ़ते हैं, यू मस्ट टेक आउट द मेन आर्टिकल, और उसका जो मेन पॉइंट्स होते हैं, दैट यू हैव टू रीड, वो आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपकी समझ बेहतर होती है। तो ये जस्ट आइडिया मैंने बताया, और लेट मी नाउ गो टू द मेन पार्ट ऑफ इट, राइट। अब मैं कल की तरह जो जहां पे मैंने क्लास एंड किया था, आई स्टार्ट फ्रॉम देयर अगेन। सो लेट मी शेयर दैट वट एवर आई रिटन देयर, तो विल गो टू सम न्यू टॉपिक्स देयर, है ना। हम लोग अभी फिर नए टॉपिक्स पे वहां पे हम जाएंगे, ठीक है। तो लेट मी जस्ट गो अगेन टू द, आई शेयर द पेज हियर, है ना, फिर मैं शेयर करता हूँ मैं आपको, एंड लेट मी गो इनटू द टॉपिक देयर। आज हम लोग निसार, गगनयान, है, ये सारी चीज, ये चीज मैं बता चुका हूँ। वी हैव डिस्कस ऑर्बिट, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्बिट्स, जो स्टेशनरी ऑर्बिट मैंने बताया था, एंड वी हैव गॉन इनटू ऑल दिस। कल मैंने स्टारलिंक बताया था, स्टारलिंक प्रोजेक्ट, वन वेब प्रोजेक्ट, हाई अर्थ ऑर्बिट, we have already covered the high earth orbit, Lagrange points. I've given the concept of Lagrange points. Any two celestial bodies, L1, L2, L3, and are on line, straight line. L4, L5 are in the 60-degree angle, ahead and behind. And then we have discussed about Aditya mission. And then I have covered to the object. So now what I'll do here, yesterday जो topic मैंने लिखा था यहाँ पर, which topic I have covered,
High Earth Orbit Lagrange Point Aditya mission. Now I'm going to discuss about launch vehicles. है ना, हम लोग लॉन्च व्हीकल्स के बारे में पढ़ेंगे. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी लॉन्च व्हीकल्स. फिर हम लोग गगनयान, निसार, चंद्रयान मिशन, जो मैंने अभी हिंदू पेपर जो मैंने बताया, आई टोल्ड यू हिंदू पेपर कि चंद्रयान पे उसमें कवरेज था एंड दैट वाज आस्क्ड इन द मेंस एग्जाम. तो हम लोग देखेंगे चंद्रयान मिशन के बारे में. विल डिस्कस अबाउट मंगलयान मिशन आल्सो. बट लेट्स गो टू द लॉन्च व्हीकल्स, राइट. लेट्स गो टू द टॉपिक ऑफ लॉन्च व्हीकल्स. लॉन्च व्हीकल्स को हिंदी में, है ना, उसको लॉन्च व्हीकल भी लिखा रहता है कई बार देवनागरी में. नहीं तो उसका जो है सही शब्द ये है प्रक्षेपण यान, है ना. लॉन्च, प्रक्षेपण यान बोलते हैं हिंदी में. प्रक्षेपण यान कहा जाता है लॉन्च व्हीकल, है ना. एलवी जो कहा जाता है लॉन्च व्हीकल. आम भाषा में जो है हम लोग कहते हैं स्पेस रॉकेट, ना. उसको अंतरिक्ष रॉकेट कहा जाता है. we use the word space rocket. See, rocket could be different type. Even we use rocket for military purpose also. For defense and military purpose, we also use rocket and missiles. But here we are studying about the part of a rocket. We are talking about the part of a space program, right? We are talking about a space program there, है ना. हम लोग स्पेस प्रोग्राम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, राइट. वहाँ उस कॉन्टेक्स्ट में वहाँ पर आता है जो स्पेस प्रोग्राम वहाँ पर है, उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं, राइट. वन सेकेंड, जस्ट आई हैव टू सी द बैटरी. My laptop battery is shown low here. Just 1 second. Yes, battery is low. Just 1 second, I'll fix the battery. ठीक है, I have checked my battery there now because वो बंद हो जाता तो फिर दिक्कत होती है, क्योंकि वो अभी 2 घंटे की क्लास है तो इसलिए मैंने उसको चेक किया. देन अगेन I'll again share the screen. Let's go to the basics, है ना. पहले बेसिक्स हम लोग पढ़ते हैं, then we'll discuss with the current aspect, है ना. मैं हमेशा ये मानता हूँ कि दोनों का बैलेंस होना चाहिए. Both should be balanced in a proper way so that if question comes from any aspect, you are able to write the answer there, right, and solve the question here. So let's say what is a space rocket here. So what is the main purpose here? To carry, right, to carry spacecraft, right, spacecraft to designated orbit. यही है जो उनका designated orbit होता है, जहां में रखना होता है, whether it is a communication satellite या earth observation satellite, meteorological satellite, whatever, astronomical satellite, whatever we want. That's the main part of where the rocket or space rocket is used. Now the different types of rockets are there worldwide, right? So when you look into rocket technology there, to be broadly divided into two types are there, right? ये मैं कई बार जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं आई मेंशन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट देयर. दो प्रकार से इसको हम वर्गीकरण कर सकते हैं. वी कैन डिवाइड इनटू टू मेन एस्पेक्ट ऑफ इट. वन इज कॉल्ड हियर कन्वेंशनल रॉकेट जो होता है. व्हेन यू लुक एट कन्वेंशनल रॉकेट which is used only once in a mission. पारंपरिक तरह से जो होते हैं एक बार उपयोग में आता है फिर वो खत्म हो जाता है. तो कन्वेंशनल रॉकेट है, इसको कहा जाता है एक्सपेंडेबल लॉन्च व्हीकल कहते हैं, कि वंस इट इज यूज्ड फिर वो दोबारा यूज नहीं होता है. हाँ, उसकी कुछ पार्ट हम रिकवर करते हैं, सर्टेन टाइप ऑफ फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज के इंजन मोटर वो रिकवर होता है, बट बाकी पार्ट जो है वो स्पेस में जाता है एंड दैट बिकम्स अ डेब्रिस, जंक. बट वी आर एबल टू डू दैट. और दूसरा जो होता है जो कि एडवांस रॉकेट होता है, दे हैव एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड रॉकेट जो है, और उसमें कई बार होता है RLV, रीयूजेबल लॉन्च जो है, हम रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल होता है जो कि मल्टीपल टाइम्स वी कैन यूज इट, है ना. पुनर्उपयोगी या पुनर्योगज जो कहते हैं, हम कई बार उसको यूज कर सकते हैं.
we can use so many times for different mission program. RLV, अगर RLV की बात की जाए, if we talk about RLV, RLV is worldwide. अगर मैं इसको बताऊं तो एक है this American Space Agency NASA, right from the beginning. Then Roscosmos, Russia. Second country is Russia, जिनके पास है. Then Chinese Administrative Aeronautical Science, China. And if you look at, these are the government entities. India is trying to develop, and we have already tested RLV-TD, reusable launch vehicle technology demonstrator. हमने टेस्टिंग किया है. आज हमारे पास कॉमर्शियल नहीं है, बट वी विल मेक अ कॉमर्शियल RLV इन फ्यूचर, है ना. इन फ्यूचर वी विल बी एबल टू मेक दैट. और फिर यहाँ पर आता है जो एंटिटी है विच यू नो, स्पेस एक्स. अगर स्पेस एक्स की बात करें तो स्पेस एक्स हैज बिल्ट फाल्कन 9 हेवी कहते हैं. बट यू नो दैट स्पेस एक्स इज प्राइवेट कंपनी, उसने भी एक रॉकेट बनाया है, ठीक है. बट स्पेस एक्स टेक्नोलॉजी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम नासा टेक्नोलॉजी. नासा जो है, नासा हैज बीन यूजिंग द नेम, जो कहते हैं स्पेस शटल कहा जाता है. नासा हैज बीन यूजिंग द वर्ड शटल, स्पेस शटल्स, 5 स्पेस शटल. अभी नासा ने रिसेंटली आर्टेमिस मिशन के लिए ओरियन, this is for Artemis mission. Now what America has decided to again take man on the moon. मानव को चंद्रमा पे उतारने का फिर से प्रोग्राम चल रहा है. और नासा का ये आर्टेमिस मिशन जो सेकेंड फेज में है, उसमें ह्यूमन को लैंड कराया जाएगा मून पे. उसके लिए एक रॉकेट बनाया गया है ओरियन स्पेसक्राफ्ट, ठीक है. तो ये सब RLV है. क्या है? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, RLV में आता है, ठीक है. रशिया जो है रॉसकॉस्मोस जो है, वहां पे अगर हम नाम देखें तो रॉसकॉस्मोस का जो नाम आता है, दे गिव द नेम हियर वोस्टॉक. दो नाम आता है, वोस्टॉक एंड सोयूज. तो यहाँ जो वोस्टॉक है, तो वोस्टॉक यहाँ क्या है? वोस्टॉक इज ELV, एक बार यूज होता है. बट व्हेन इट सेज सोयूज इज RLV, SOYUJ. लाइक सोयूज T11, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, आपको पता है 1984 में राकेश शर्मा, राइट, ही इज इंडियन एयरफोर्स स्क्वाड्रन लीडर. He went to outer space. That was Soyuz. That was the name of the Russian rocket called Soyuz. आपको पता है उस समय पूछा गया था कि भारत कैसा दिखता है वहां से, तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. जब उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ये सवाल पूछा था, तो दैट वाज सोयूज, सोयूज नाम है, सोयूज का उपयोग किया गया था. और जब ये वोस्टॉक का पड़ता तो वो ELV है रशिया का. देन यू नो दिस चाइना. अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना का ये है, जब आप लॉन्ग मार्च आता है, लॉन्ग मार्च, जब भी आप लॉन्ग मार्च पढ़ते हैं तो दैट इज ELV, ठीक है, जो कि एक बार यूज होता है. एंड व्हेन दिस वर्ड कम्स, सिंझाओ, जब भी आप करंट अफेयर्स में सिंझाओ वर्ड पढ़ते हैं, चाइना का मिशन जो है ये RLV है, विच टेक मैन टू द स्पेस एंड ब्रिंग बैक. चाइनीज एस्ट्रोनॉट को वापस लाने के लिए सिंझाओ का उपयोग होता है. अभी चाइना सक्सेसफुली क्या बिल्ड कर दिया? स्पेस स्टेशन, राइट. स्पेस स्टेशन चाइना इज ट्राइंग टू बिल्ड देयर. तो उसके लिए क्या करता है वो? RLV, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल. इंडिया विल बिकम द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव दिस काइंड ऑफ थिंग. इंडिया इज इन द प्रिपरेशन ऑफ दैट. इसरो जो है, इसरो इज ट्राइंग टू डेवलप. ISRO जो है अभी डेवलपमेंट फेज में. हमने अभी इसका टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, व्हाट इज कॉल्ड TD, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जो है, ये हमने कैरी ऑन किया है. दैट वाज 2016, जस्ट एक्सपेरिमेंटल. वी डिड द एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग देयर. दैट वाज अ मिशन देयर. इन फ्यूचर विल डेवलप देयर, है ना. हम भविष्य में बनाएंगे इसके लिए पूरी तैयारी चल रही है. गगनयान मिशन के बाद एक बात को ध्यान रखना है कि गगनयान मिशन में हम लोग RLV यूज नहीं करेंगे.
गगनयान मिशन में वी विल यूज LVM-3, यानी कि GSLV MK3 Mark 3, जिसका केवल काम होगा क्रू मॉड्यूल को पहुंचाना। विल ओनली जस्ट लॉन्च क्रू मॉड्यूल जस्ट लाइक ए सैटेलाइट। हाँ, लेकिन बाद में चलकर व्हेन इसरो विल डेवलप RLV, तो वो क्या होगा, वो जाएगा और वापस आएगा, वो प्रोसेस में भी। लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि गगनयान में जैसे हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, वैसे ही GSLV MK3 या LVM-3 का हम उपयोग करेंगे। वी आर गोइंग टू यूज दैट वन। वहां RLV नहीं है। RLV हम फ्यूचर में जब पूरी तरह से बना लेंगे, तब वहां पर RLV का काम होगा। ठीक है, तभी यहाँ पर ऐसा चल रहा है। तो लॉन्च व्हीकल यहाँ पर है। अब इसरो का अगर हम PSLV की बात करें, अब जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, अब ये दोनों जो है PSLV एंड GSLV, बोथ आर ELV, यानी एक बार यूज हो गया तो खत्म है, वो दोबारा यूज नहीं होता है। ठीक है, तो अभी हम प्रोसेस में है। व्हाट वी आर गुड एट, एक्सपेंडेबल लॉन्च व्हीकल। हमारे पास जो रॉकेट्स हैं वो सब एक्सपेंडेबल है। ठीक है, हम पहुंचा सकते हैं, लेकिन हम वहां से वापस नहीं ला सकते हैं। तो उसके लिए हमें RLV को डेवलप कर रहे हैं। वी आर डेवलपिंग दैट वन। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और GSLV, जियो सिग्नल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वो हमारे इसमें आता है। राइट, तो मैंने एक बेसिक व्यू बताया कि यहाँ पर जो चीजें समझना है कि स्पेस टेक्नोलॉजी में जो है कई इसके प्रोपल्शन सिस्टम होते हैं। तो नाउ व्हाट आई वांट टू ब्रिंग हियर, लेट मी ब्रिंग हियर, आई विल कम बैक टू द PSLV GSLV, but what I want to bring here, sounding rocket. Yesterday I have said that we will be discussing about this concept of sounding rocket. अब मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है फॉर कमिंग एग्जाम, इट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, साउंडिंग रॉकेट, है ना। साउंडिंग रॉकेट जो है इस साल के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके संदर्भ में क्वेश्चन इस बार के पेपर में आ सकते हैं, साउंडिंग रॉकेट के बारे में। साउंडिंग जो रॉकेट है वो आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्या है साउंडिंग रॉकेट? एनीबॉडी इन द क्लासरूम हु कैन टेल मी व्हाट इज साउंडिंग रॉकेट? यस, एनीबॉडी इन द क्लासरूम, व्हाट इज साउंडिंग रॉकेट? ये बहुत इंपॉर्टेंट रॉकेट है इंडिया के लिए, एंड यू कैन सी दिस इज अ फाउंडेशन। थोड़ा मैं कुछ बैकग्राउंड भी बताऊंगा इसमें, बट लेट मी सी हियर, सो आई विल आस्क समबडी हियर, मनीष ठाकुर, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? हाँ, मनीष ठाकुर, आप थोड़ा अनम्यूट कीजिए, तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ मैं। आई थिंक इज इन लाइब्रेरी देयर। शिवशंकर, शिवशंकर, सर आप अनम्यूट कीजिए। ओके, क्या है साउंडिंग रॉकेट? एनी आइडिया क्या है साउंडिंग सर रॉकेट? इट एक्सप्लोर अपर एटमॉस्फेरिक रीजन। ओके, गुड, वेरी गुड। एनीथिंग मोर यू वांट टू ऐड? यू नो राइट। आइडिया सर। ओके, ओके, ऑलराइट, थैंक यू। सो नाउ लेट मी आस्क, इस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वी नीड टू बी अवेयर ऑफ दिस, ऑल दिस पार्ट। आई नॉट आस्क भानु, बट लेट मी आस्क समबडी हु आर हाइडिंग बिहाइंड द कैमरास, सो लेट मी आस्क देम। जो लोग दिख नहीं रहे उससे मैं पूछता हूँ मैं। साहिल, साहिल, Good afternoon, sir. good afternoon. You're hiding behind the camera, that's what I've asked you to unmute yourself. Okay, what is sounding rocket? I don't have any idea. Okay, thank you. Bapi Mishra. Yes, Bapi. Yes, sir. Yes. क्या है sounding rocket? What is sounding rocket? A rocket that makes sound. वो sounding rocket है? क्या Sir, है? I think it may be the thrust which the rocket press on the land. Okay. All right. Thank you. Okay, Lukman Gangoi. Can you unmute yourself? Lukman Gangoi.
I think he's not there. All right, so I'll ask one more last person there, then I'll go to the part of it. Let me ask Himanshi Luthra. Himanshi, can you unmute yourself? Himanshi Luthra? Yes. Good afternoon, sir. Good afternoon, Himanshi. How are you? Good. So, Yes, what is sir, I'm good. what is sounding rocket? Any idea? क्या है sounding rocket? No, sir, no idea. Okay, कोई बात नहीं. It's all right. So let me get back here. So let me just get back here. पहले कुछ चीजों को मैं समझाता हूँ. Then I'll go to technical aspect पे. Then I'll come to the technical aspect. मैं कुछ चीज समझाता हूँ. Technical aspect हम लोग आगे आएंगे. When India started with the space program, है ना, जब इंडिया ने स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत की 1960s में, that time we didn't have any kind of launch vehicle technology. We took help of two countries. One is France. बहुत तो इस बात को नहीं जानते हैं कि फ्रांस and India have strategic relation for a long time. And another country, Russia, Soviet Union that time. 61 में, 1961, there's a place in Kerala called Thumba. अभी मैं next week मैं वहां पर रहूंगा. Next week मैं ट्रैवल कर रहा हूँ केरला में, त्रिवेंद्रम में, तिरुवनंतपुरम में. तो Thumba is very near to is a coastal village on near to Arabian Sea. And Arabian Sea के पास वहां पर है. And Thumba, we have a very special, very important two organization of ISRO. One is Dr. Vikram Sarabhai के नाम पे है, Vikram Sarabhai Space Center, VSSC. And we have another one, very important one, TERLS, Thumba Equatorial Rocket Launch Station. 1961, that time Dr. Vikram Sarabhai, father of space program. We built a sounding rocket. We just built a sounding rocket, but we failed. हमारा पहला टेस्ट फेल हो गया था. The technology was from France called Centaur. We took a rocket technology called Centaur. CENTAUR. TAUR. We have taken that. फिर बाद में चल के 63 में, अब मैं क्यों बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, you'll understand. 1963 we again rebuilt on that and we did that. India has a long odyssey with space program. उस समय साइकिल में पार्ट्स को कैरी करते थे, है ना, रॉकेट के पार्ट्स वगैरह कैरी करके असेंबल किया जाता था. बुलॉक कार्ट यूज किया जाता था. एंड दैट टाइम डॉक्टर कलाम, APJ Abdul Kalam, he was also in that team which assembled the rocket and built the sounding rocket. Later on, Dr. Kalam took the same technology and built a kind of rocket called SLV, Satellite Launch Vehicle Third. SLV rocket, which is our India's first rocket which was built SLV. So you can say sounding rocket is a test bed. Then बाद में चलकर यही sounding rocket की टेक्नोलॉजी से बाद में DRDO में अग्नि मिसाइल डेवलप किया गया. We have Agni missile, you know, integrated guided missile development program under the guidance of Dr. Kalam. We went to develop missiles there, indigenous missile. Again, the technology comes from sounding rocket. Just the background, I'm telling you that. You should be aware of the background there. So France, you know, this time Macron was a chief guest in Republic Day parade. France के साथ हमारा बहुत पुराना संबंध है. And we have been borrowing many technology from France, जैसे from Russia. Sounding rocket का बहुत बड़ा योगदान है हमारे अंतरिक्ष के क्षेत्र में. उस समय काउ शेड गौशाला है ना, वहां पर एक चर्च है और मैं अभी वहां पर जाऊंगा, म्यूजियम भी है. अभी जस्ट नेक्स्ट वीक जब मेरा वहां पर क्लासेस वगैरह होंगे तो आई एम वेरी एक्टिव इन सोशल मीडिया, राइट. तो मैं शेयर करता रहता हूँ जहाँ जहाँ मेरा विजिट होता है. तो आई एम गोइंग टू शेयर दैट इमेज. देयर इज अ म्यूजियम, मैरी मैगडलीन चर्च. देयर इज अ चर्च कॉल्ड मैरी मैगडलीन चर्च. उस समय फादर जो वहां के थे प्रिस्ट से एक जगह मांगा गया काउशेड. वहां पर जाके हमारे वैज्ञानिकों ने दे वर्कड टू डेवलप द साउंडिंग रॉकेट. एंड फ्रॉम दैट टाइम 61 दैट टाइम टिल नाउ we are using sounding rocket. Later on we developed
Rohini series of sounding rocket. Rohini, that's a name given to sounding rocket. आज इंडिया के पास रोहिणी नाम का sounding rocket है, which we are using right now at this point of time. अब ये क्यों important एग्जाम का? Because the Hindu paper had an article on this, right? I'll show you the article. I'll just share the article here. You'll see this article. When you do the search, है ना, जब आप सर्च करेंगे तो आपको आर्टिकल वो मिल जाएगा. मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ. I'm sharing my iPad here so that you'll be able to see what I'm doing the search here. Right? Now you'll see that. So what I'm writing here, this ISRO 63 2023. कितना साल हो गया? 50 साल या 60 years, है ना? 60 साल हो गए ना, 60 years. So if you look at here, this one, sounding rocket, right? The Hindu. See here. I'll not open the article, but just मैं आपको idea दे रहा हूँ. So what has come in the newspaper? 200th successful launch of RH200. What is RH? Rohini. Rohini series of sounding rocket. Right? That was in news there. कब का बात है? 2022. Now see here. India's first hybrid rocket launched from Tamil Nadu there. Then you can see P.D. Bhaskar, the man who played a key role in the first sounding rocket. 1st October 2023. In India attempts 200th consequently successful launch of part of it there. And now you see here, this one. Vikram Sarabhai Space Center to mark 60th anniversary. 60th anniversary, right? And now you can see here, this one. ये 19th November को न्यूज में आया हुआ है. Sounding rocket launch planned on November 25th to mark the occasion, right, of what? Sounding rocket program. Now you can see here, Union Minister Jitendra Singh to inaugurate 60th. That, and can you see here, America का भी नाम है, Nike Apache. Can you see? Nike Apache. Tumba. Right? Now see another one here. ISRO Norway. ISRO Norway and the Svalbard mission of 1997. Svalbard. Where is Svalbard? Where is Svalbard? आपको पता होगा स्वालबार्ड के बारे में. स्वालबार्ड कहां पर है बताओ मुझे. इट्स अ स्मॉल आइलैंड. ये आइलैंड है नियर टू नॉर्थ पोल. नॉर्थ पोल के पास एक आइलैंड है स्वालबार्ड. इंडिया हैज अ रिलेशन विद नॉर्वे. वी हैव अ एग्रीमेंट विद नॉर्वे. स्वालबार्ड में वर्ल्ड का सबसे बड़ा सीड बैंक है. वर्ल्ड्स बिगेस्ट सीड बैंक दैट लोकेटेड इन नॉर्वे देयर. एंड यू कैन सी हियर 13 जून 2023. मैं बार बार ये क्यों बोलता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए इसलिए कहता हूँ मैं. देयर इज रीजन बिहाइंड इट. मैंने कल ही बताया था आपको, ये बाजार में जो भी मटेरियल बिक रहा है, द फोटोकॉपीज एंड जेरोक्स, ठीक है, दैट इज अ रिस्क. मैं बता देता हूँ. और जो लोग आंख बंद करके यही सब बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल पढ़ रहे हैं, दे विल रिग्रेट ऑन द डे ऑफ द एग्जाम. उस दिन जो है रिग्रेट करेंगे. जो लोग न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं, उनको हेडलाइन फॉलो करते हैं, दे नो कि क्या क्या चीजें हैं. और पॉसिबिलिटी है कि साउंडिंग रॉकेट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. अभी हम लोग आई विल कम टू साउंडिंग रॉकेट मेन एस्पेक्ट, बट आई एम गिविंग यू द आइडिया वेयर हेडलाइंस हैव बीन देयर. हेडलाइंस कहां कहां पर है, यू विल फाइंड दिस वन. देन यू कैन सी फ्रंटलाइन मैगजीन 1963, फर्स्ट रॉकेट लॉन्च फ्रॉम तुम्बा. So if you see here, this one, Frontline magazine here. This is the one, right? What you see here, this is the one which you find here, right? This is one you have, sounding rocket. Nike Apache rocket ready for the launch. 61 में जब हमने किया था, फ्रांस का तो फेल हो गया था. Now you see this one here, Space Odyssey, November 21st.
And you can see what is given here. Launch site on bullock cart. Later rockets would take bicycles. ये चीज नाइकी अपाची का जो था 715 किलोग्राम, कितने हाइट तक पहुंचा 207 किलोमीटर्स, है ना, 30 kg पेलोड को लिया गया जो है। और यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, what I would like to just add here, कि now same thing technology has been used for SSLV, small satellite launch vehicle. Our new rocket SSLV is based on sounding rocket technology. तो मैंने क्या बताया, ये टेस्ट बेड है, ये हमारा टेस्ट बेड है। साउंडिंग रॉकेट नहीं होता तो आज इंडिया के कोई भी रॉकेट्स नहीं होते, वहां से बिगनिंग होता है। तो now let me get to the main point of it. I'll now write it here. Now let me come to the main aspect of it. Sounding rocket का जो है, तो first of all, now let me come to this part. What is first thing here? First thing is that in nautical science, you know, when you say nautical science, to sound, the words to sound use होता है, means to take measurement, to carry out measurements. This is the meaning here. इसीलिए इसका नाम पड़ा है साउंडिंग। टू साउंड मतलब when you say sound, SOUND, when you say sound, उसका मतलब होता है to take measurements. So what is second thing here? Second thing is that it is a one stage or two stages, right? Solid propellant, यहाँ पर solid use होता है, solid fuel, not the liquid. Solid propellant. What is a propellant? Fuel, जिसे बर्न करते हैं, fuel based small rocket, right? Either one stage or two stage, मतलब either एक इंजन होंगे, दो इंजन होंगे, either one motor or two motors. Small rocket, right? Which is used to explore the outer atmosphere. Outer atmosphere के exploration में इसको use करते हैं. Meteorological aspect, है ना? We can explore the outer atmosphere. That is a meteorological aspect. Weather science and meteorology. उसके लिए इसको यूज करते हैं। क्लाउड वगैरह जो है, इट कैन गो अप टू 200 किलोमीटर्स, है ना, 200 किलोमीटर्स तक हम जा सकते हैं। तो एटमॉस्फेयर कवर हो जाएगा उसमें, अपर पार्ट एटमॉस्फेयर। आपको पता है ट्रोपोस्फेयर अराउंड 15 to 18 किलोमीटर्स, देन स्ट्रेटोस्फेयर 50 किलोमीटर्स, मीजोस्फेयर 80 किलोमीटर्स, थर्मोस्फेयर, है ना, उसके बाद आते हैं, एंड देन आफ्टर द एक्सोस्फेयर, हम वहां तक कर सकते हैं। अभी मैं और बहुत इंपॉर्टेंट बात में बताऊंगा, अभी मैं इसके पॉइंट्स पे करता हूँ। अपर एटमॉस्फेयर क्या चीज, यहाँ पर इसका स्पेस में क्या यूज होता है? इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इट इज यूज्ड, है ना, इट इज यूज्ड टू टेस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट, जो क्रिटिकल कंपोनेंट होते हैं, क्रिटिकल कंपोनेंट्स ऑफ स्पेसक्राफ्ट, सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट के जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं, है ना, उसको टेस्टिंग किया जाता है, राइट, इन अपर एटमॉस्फेयर। बिफोर वी डेवलप द सैटेलाइट, तो हम उसका टेस्टिंग करते हैं। जो सैटेलाइट वगैरह होते हैं उसके हम टेस्टिंग यहाँ पर करते हैं, जो क्रिटिकल पार्ट्स होते हैं उसके, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट सिस्टम्स, वी डू द काइंड ऑफ टेस्टिंग देयर, राइट। सो इन स्पेस टेक्नोलॉजी इट इज यूज्ड टू टेस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं, कोई पार्ट है, पार्ट समथिंग है, नॉट ओनली द स्पेसक्राफ्ट, इवन फॉर रॉकेट सिस्टम ऑल्सो, जो लॉन्च व्हीकल का सिस्टम होता है उसकी भी टेस्टिंग की जाती है साउंडिंग रॉकेट के थ्रू। नाउ सेम थिंग हियर, साउंडिंग रॉकेट, व्हाट इज फोर्थ थिंग हियर, यहां पर जो है इसका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ साउंडिंग रॉकेट, राइट, यूज्ड टू डेवलप
the missile there, to develop military rockets, जो मिलिट्री तौर पे रॉकेट होता है, मिलिट्री रॉकेट और मिसाइल्स, उसको हम डेवलप करते हैं. We do that for military purpose also there. और अभी बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है जो आपको ध्यान में रखना है. इंडिया ने लास्ट टाइम जनरल इलेक्शन, लास्ट टाइम लोकसभा इलेक्शन 2019, उस समय बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज में था मिशन शक्ति, what is called ASAT, anti-satellite weapon. Even that is based on sounding rocket. कितने किलोमीटर जा सकता है? 200 kilometers. And what is 200 kilometers? Is outer space. मैंने क्लास में बताया था करमन लाइन, after 100 kilometers outer space begins. So even for having the kind of weapons, missiles and weapon like ASAT, sounding rocket can become a test bed. That could be the part of it. And as I said here, recently we had developed SSLV, small satellite launch vehicle, is based on this technology, based on sounding rocket. साउंडिंग रॉकेट की टेक्नोलॉजी पे ही हमने, नाउ क्या हो गया कि इंडिया में डिमांड बढ़ गया है, छोटे सैटेलाइट को लॉन्च करने का मार्केट बड़ा होता जा रहा है. एंड मेनी ऑफ द फॉरेन कंट्रीज, even the companies, private companies from foreign countries, they want their small satellite to be launched. Like it can be 5 kg, 10 kg, 15, it can go up to 150 किलोमीटर रुपीज, है ना. भारत क्यों करोड़ों रुपए खर्च करके PSLV या GSLV बना के छोटे सैटेलाइट को लॉन्च करें? ज्यादा इकोनॉमिकल होगा कि हम छोटे रॉकेट बनाएं और उससे हम छोटे सैटेलाइट को लॉन्च कराएं, तो हमारा पैसा भी कम बचेगा, मतलब कम खर्च होगा. We will spend less money and we'll earn more money. That's why SSLV was started, small satellite launch based vehicle series. Presently from Thumba, right? Presently ISRO is using Rohini series, sounding rocket, right? The sounding rockets here. From where? This one. We have a TERLS, Thumba Equatorial Rocket Launch Station, right? Thumba Equatorial Rocket Launch Station, वहां से हम करते हैं. इसको इक्वेटोरियल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां से इक्वेटोरियल मैग्नेटिक लाइन, कौन सा लाइन? मैग्नेटिक लाइन. अर्थ है जो जियो मैग्नेटिज्म, पृथ्वी का जियो मैग्नेटिज्म है. और मैग्नेट का क्या होता है? पोल्स होता है, इक्वेटर होता है. व्हाई इट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल? बिकॉज अर्थ मैग्नेटिक इक्वेटर लाइन क्रॉस पास थुम्बा, दैट्स व्हाई द नेम हैज बीन गिवन. ठीक है. तो अब यहाँ पर जो है रोनी सीरीज का जो मैंने बताया यहाँ पर, ये डेरिवेटिव है, इसको ध्यान में रखना है क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा स्टेटमेंट टाइप तो ये वहां पे मेंशन किया रहेगा. एंड नाउ इफ यू सी हियर, सेम थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू ऐड हियर, जब आप इसरो के साइट में जाएंगे, you'll find here this one, ये चीज है. एरोनॉमी मेट्रोलॉजी, राइट, वहां पर ये चीज है. बालासोर का भी नाम है, बालासोर इज इन उड़ीसा, वहां से भी हम टेस्टिंग करते हैं. सतीश धवन स्पेस सेंटर, नौ सी है. सार, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, वहां से भी टेस्टिंग किया जाता है. RH-300 MK2, एंड यू हैव RH, ये सबसे ज्यादा एडवांस है, RH-560 MK2, that we use Satish Dhawan, and you can see here Rohini series जो है. So we have this kind of a system here. Now altitude और वो सब उतना important नहीं है. What is very important कि इसका एप्लीकेशन क्या है ना. और ये 475 किलोमीटर तक हम जा सकते हैं, है ना. इवन दस, अब ये देखो आप, मैंने अभी क्या बताया, अभी नाउ आई हैव टोल्ड यू ना दैट ASAT,
ठीक है, अब मैं इस पे क्या लिख रहा हूं, मैं साउंडिंग रॉकेट। दिस वाज द पार्ट ऑफ इट। पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क 2 है ना, इंटरसेप्टर वहां पर जो हमने किया था वहां पर, विच वी हैव यूज्ड देयर वन, यू विल फाइंड ऑल दिस। तो अगेन दिस इज बेस्ड ऑन ये जो हमने डेवलप किया था। अगेन द साउंडिंग रॉकेट बिकेम a very important platform to develop such kind of system there, क्योंकि जो सबसे एडवांस्ड है, वी कैन गो टू द आउटर स्पेस, 400 किलोमीटर हमारे लिए कुछ नहीं है, वी कैन इजीली गो इनटू दैट वन, राइट। एंड यू कैन सी हियर, दिस इज व्हाट आई हैव कम, आई हैव डिस्कस्ड दैट। क्या हुआ तो मिशन शक्ति में हमने सिंपली छोटा सा रॉकेट बनाया, राइट, and we made that A-side weapon. We just simply made A-side weapon. We made a small satellite and we just impacted it. With the high speed, we impacted it. So the satellite broke into pieces. तो वहां पर ये भी सवाल उठाया गया था कि क्या इंडिया को ये काम करना चाहिए, to destroy a satellite in the space, is it advisable? But the thing was, the satellite was very small. You can say nano satellite. What do you call nano satellite? The impact was such that it broke into very small pieces. They didn't create that much of junk, space debris. तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीजें जो है, पृथ्वी डिफेंस व्हीकल, ये सारे जो मिसाइल वगैरह का है, वो भी साउंडिंग रॉकेट पे बेस्ड होता है। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ, ये पता होना बहुत जरूरी है। रोहिणी सीरीज ऑफ सैटेलाइट को ऐड करने के लिए, प्लस रोहिणी सीरीज ऑफ द साउंडिंग रॉकेट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट, वो चीज यहाँ पर है। और अभी जो मैंने बताया, अब ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दैट इज अ 4 स्टेज, अगेन 3-4 स्टेज का रॉकेट वहां पर बनाया गया। तो अगर हम इसको देखें, अगर हम वी स्टडी अगेन आई शेयर दिस, आई शेयर द स्क्रीन हियर, और लेट मी सी अगर कोई है डाउट है, ऑल राइट, अदरवाइज आई मूव ऑन देयर, और लेट मी फर्स्ट डिस्कस दैट। मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ, देन लेटर ऑन आई कैन टेक द डाउट, फिर बाद में मैं डाउट में लूंगा मैं, ठीक है। सो नाउ इफ यू सी हियर दिस व्हाट आई मेंशन हियर, ये जो मैंने भी मेंशन किया है साउंडिंग रॉकेट टेक्नोलॉजी का जो है, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम कमिंग हियर, इफ यू लुक एट इंडियाज लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम, ठीक है, in this context, launch vehicle program, what we have done is that, see, initially we built this rocket, SLV 80s में हुआ था, SLV third was successful, and then we built ASLV, augmented satellite launch vehicle, है ना। So this was the first, then we went for the second augmented satellite, फिर उसके बाद जो है we have went to develop PSLV, polar satellite launch vehicle, and then we went to develop GSLV, geosynchronous satellite launch vehicle, ठीक है। Then what comes here is the fifth one, that is a SSLV, small satellite launch vehicle, है ना, वहां पे हमने डेवलप किया। Now GSLV, you are aware, GSLV has a very important technology called cryogenic engine, right? The cryogenic engine in the upper stage we use in GSLV, और इसी का एक फॉर्म है which you all know, GSLV MK3 Mark 3, what we call LBM3, that we call it LBM3, that is a derivative of GSLV, है ना, GSLV का यहाँ डेरिवेटिव यहाँ पर है। तो ये जो पार्ट है PSLV एंड GSLV, ऑलरेडी क्वेश्चन है आस्क्ड, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड GSLV, अगर हम उसको कंपेयर करें तो PSLV इज द फर्स्ट रॉकेट इन इंडिया विच यूज सॉलिड अलोंग विद लिक्विड, है ना। वी हैव अ सॉलिड इंजन हियर, और यहाँ पर एक लिक्विड, है ना, प्रोपल्सन, जो रॉकेट को प्रोपल करने के लिए यूज होता है, दैट इंजन which has been developed called Vikas engine. The first time liquid with solid that was used in PSLV, right? Vikas engine, right? तो विकास इंजन जो है इसका, महेंद्रगिरी is the place where we have LPSC. There is a organization called LPSC, Liquid Propulsion System Center, that is located in Mahendragiri in Tamil Nadu. That same center, Mahendragiri in Tamil Nadu, the same center, Liquid Propulsion System Center, has developed the first
that engine which use liquid fuel, that's called Vikas engine. Plus, same center has also developed indigenous cryogenic engine, where we use the cryogenic engine in the GSLV, है ना. जो GSLV हम यूज करते हैं क्रायोजेनिक इंजन जो इंडिजिनस है, वो भी LPSC सेंटर के द्वारा बनाया गया है, महेंद्रगिरी में बनाया गया. दैट विकास इंजन को भी वहां डेवलप किया गया. हाल ही में एक मूवी आई थी, नंबी इफेक्ट. यू हैव सीन दैट मूवी नंबी इफेक्ट? ठीक है, आर माधवन, नंबी इफेक्ट. दैट्स बेस्ड ऑन द life of a scientist, Nambi Narayan, ISRO scientist who was booked under espionage, जासूसी. राइट, वहां भी बड़ा अच्छा एंगल है, मालदीव का एंगल आता है. उनको फंसाया, उसको जेल, मतलब उसको जो FIR हुआ था, ये हुआ था जासूसी करने का. वहां पर मालदीव्स का भी एंगल है. प्रेजेंट स्टेज जो मालदीव चल रहा है, बट ही वाज एक्यूटेड, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया. नंबी नारायण वाज एक्यूटेड इन दैट केस. तो दैट मूवी इफ यू लुक एट, वहां पर फ्रांस में, अगेन रिमेंबर दैट, ये जो विकास इंजन है, दिस विद अगेन विद हेल्प ऑफ फ्रांस. आपको उस फिल्म में एक सीन है, एक जगह फिल्म में जहां पर फ्रांस में वो लोग टेस्टिंग कर रहे हैं. इसरो साइंटिस्ट वेंट टू फ्रांस एंड दे डेवलप दैट लिक्विड इंजन. और वो देखा गया कि क्या उतना देर तक टॉलरेट कर सकता है, उतने सेकंड तक. राइट, उस फिल्म में एक जगह दिखाया गया है कि जहां हम विकास इन्वेस्ट करते हैं, और उसमें पहली बार हम फेल हो गए थे. वी आर फेल इन इनिशियल स्टेज. लेटर ऑन दैट इंजन वाज डेवलप्ड. टुडे वी आर यूजिंग PSLV, GSLV, वी यूज विकास इंजन. और GSL में एक और चीज है, क्रायोजेनिक इंजन, वो पार्ट जो है. SSLV में हम यूज करते हैं सॉलिड को, सॉलिड इंजन इज यूज देयर. राइट, so if you look at here in terms of part, अगर देखा जाए तो अगर हम PSLV की बात करें तो PSLV, you all know, simply if you look at the PSLV, that PSLV, Polar Satellite Launch Vehicle. So what is here? We have initially solid, this motor is used solid, then it is forward liquid. Now this is liquid stage, this is Vikas engine. Then it is scrambled with solid, फिर solid fuel को हम use करते हैं. And then the last stage, liquid. Again we go for liquid. And then we put all the satellite, right? All the satellites are kept here. जो payload होता है, what we call payload. The payload is a satellite which keep in the upper part. So if we look at, there's a first stage, there's a second stage, there's a third stage, there's a fourth stage. Where we use the PSLV part, Polar Satellite Launch Vehicle. जबकि GSLV, if you look at, GSLV, if you look at, तो GSLV का जो normal जो design होता है, तो here GSLV, if you take in terms of GSLV, the GSLV is more heavier. अगर GSLV की बात करें तो first GSLV what we developed, it was again solid, then liquid. Again the liquid is a Vikas engine, is a derivative of Vikas engine. Then comes here cryogenic. Which use liquid hydrogen, liquefied hydrogen gas, liquid form, burned with oxygen, liquid oxygen. Liquid hydrogen, liquid oxygen, cryogenic. Cryogenic means extremely low temperature. We store the hydrogen and oxygen and we convert it, burn it to generate thrust. And then again, upper part, what you find here, we have the payload here. Now this is what you find, this is the GSLV ka, when we developed the first time, the GSLV Mk1, Mark 1. First derivative was there. हमने Mark 1 को डेवलप किया था. तो हम Mark 1 was first stage, second stage, third stage. Upper stage was cryogenic. 3 engines were used. Vikas engine was second, and third one was a cryogenic engine. That was used in GSLV Mk1. But now, after that, if you look at, after in this way, we are a derivative of PSLV. We went to develop, we went to develop a derivative of both. दोनों का हमने derivative develop किया. For PSLV, we developed the extra large version, XL.
where we use booster, क्या यूज करते हैं? 6 strap-on motors. Many time you'll come across PSLV XL, extra large. जब हमें ज्यादा हेवी सैटेलाइट को लॉन्च करना होता है ना, जब हमें बहुत हेवी सैटेलाइट को लॉन्च करना होता है, देन वी गो फॉर एक्स्ट्रा लार्ज वर्जन, एक्सेल वर्जन, राइट? तो यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा लार्ज वर्जन की हम बात करें तो इसी का डेरिवेटिव है। अब मैं दोनों का डेरिवेटिव मैं बता रहा हूँ कि क्या नेक्स्ट स्टेज जो हमारा इवॉल्व किया, राइट? आई जस्ट स्लाइटली गो अप हियर। तो हमने जो इसको डेवलप किया, सेम PSLV वी वेंट ऑन फर्दर टू डेवलप 2008 में, 2008 चंद्रयान 1 मिशन, उसके लिए हमने क्या किया? सॉलिड, देन लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, एंड देन व्हाट वी डिड वाज देयर इन दैट केस, ये जो है 6 6 जो है, यहां पर जो पहला स्टेज जो होता है, पहले स्टेज में 6 स्टेप-ऑन मोटर्स, ये 6 स्टेप-ऑन मोटर्स होता है जो कि इसको स्ट्रैप किया जाता है। द 6 स्टेप-ऑन मोटर्स, ये एक तरह का बूस्टर का काम करता है टू, जब हमें हेवियर, व्हेन वी टेक हेवियर काइंड ऑफ सैटेलाइट स्पेसक्राफ्ट, तो वी हैव 6 स्टेप-ऑन मोटर्स हियर। ये कहाँ होता है? स्टेज 1 में। वी मेड इन द स्टेज 1, पहले स्टेज के रॉकेट के साथ हम करते हैं। नाउ दिस इज द एक्स्ट्रा लार्ज, ये जो है दिस इज PSLV एक्स्ट्रा लार्ज। जब हमें थोड़ा हेवी सैटेलाइट को लॉन्च करना हो, तो हमने पहली बार फर्स्ट टाइम चंद्रयान 1 मिशन में, इंडिया ने पहली बार चंद्रयान 1 मिशन में PSLV एक्स्ट्रा लार्ज का यूज किया, 6 स्टेप-ऑन मोटर्स को यूज करके। फिर हमने क्या किया? GSLV का जो है, GSLV का हमने डेरिवेटिव बनाया। तो GSLV का डेरिवेटिव में Mark 2 पहले आया, हमने डेवलप किया Mark 2। नाउ अगेन हियर सॉलिड, लिक्विड, क्रायोजेनिक, है ना, ये हमने डेवलप किया। एंड देन अब यहां पर हमने दो, पहले स्टेज में होते हैं दो, चार, यहां पर दो नहीं चार, चार हमने ऐसे बूस्टर को लगाया। दिस फोर स्टेप-ऑन मोटर्स को लगाया। ये मैं ग्रेजुअल डेवलपमेंट बता रहा हूं कि हाउ इंडिया वेंट टू डेवलप्ड, है ना, स्टेप-ऑन मोटर्स जो है स्टेज 1, अगेन द सॉलिड के साथ स्टेज 1, वी वेंट टू डेवलप दैट। नाउ दिस इज व्हाट यू सी, दिस इज द GSLV MK2, ये Mark 2 है। जैसे हमने PSLV में वी एडेड स्टेप-ऑन मोटर्स टू मेक PSLV एक्स्ट्रा लार्ज, वैसे GSLV के साथ हमने 4 जो है स्टेप-ऑन मोटर्स को लगा के Mark 2 डेवलप किया। वी मेड अ Mark 2 काइंड ऑफ थिंग देयर डेवलपमेंट। एंड नाउ वी हैव मेड LVM3 Mark 3, GSLV से ही Mark 3 में डेवलप किया है, and right, we have developed Mark 3 kind of thing there. So now what further we have developed from here? Now we have gone to develop MK3. अब हमने LVM3 को डेवलप किया है, what we call GSLV MK3 Mark 3. Now what is Mark 3 if you see? Mark 3 जो है 640 tons का है, is around 640 ton, 640 ton kind of तो we have this is a main core, यहाँ कोर जो है यहाँ पर लिक्विड होता है, जैसे लिक्विड, देन यू हैव क्रायोजेनिक, यहाँ पे पेलोड होता है, एंड देन वी हैव एडेड 2 हेवी बूस्टर। अब यहां पर जो है हमने बड़ा बूस्टर लगाया, वी मेड 2 हेवी बूस्टर। अब ये जो है 2 हेवी बूस्टर है,
दिस इज मार्क 3। और यहां पर क्या है, S-200 सॉलिड है ये, तो यानी कि ये सॉलिड बूस्टर है, सॉलिड प्रोपेलेंट सॉलिड फ्यूल को यूज होता है यहाँ पर। दो यहाँ बूस्टर यहाँ पर है। और यहाँ जो L जो है, ये लिक्विड कोर इंजन कहते हैं, लिक्विड कोर इंजन, कोर इंजन followed by upper cryogenic stage, cryogenic engine. This is the LBM-3. Now this is 640 tons. 1 ton is equal to 1000 kilogram. Is almost equal to thousands of elephants. When it stands on the launch pad, Sriharikota Pulicat Lake, जब ये खड़ा होता है ना, 42 ये जो है 44 मीटर्स टॉल है, ऑलमोस्ट अराउंड 18 to 20 स्टोरी बिल्डिंग, 18 मंजिला इमारत की तरह खड़ा होता है वो अपने लॉन्च पैड में। इतना बड़ा रॉकेट है वो। और S-200 मतलब 200 टन, L-110 110 टन ऑफ लिक्विड फ्यूल इट कैन कंज्यूम। C-25 मीन्स क्रायोजेनिक इंजन 25 टन्स। ये जो नंबर मतलब टन्स, कितना फ्यूल वो यूज करता है वो नंबर है। एक सॉलिड बूस्टर 200 टन का सॉलिड फ्यूल को कंज्यूम करता है। दो बूस्टर्स है, 2 बूस्टर्स आर देयर। फिर उसका लिक्विड 110 टन्स लिक्विड फ्यूल को कंज्यूम करता है। और लास्ट में क्रायोजेनिक इंजन जो जाके 25 टन का है। इसको कहा जाता है फैट बॉय, इज अ मॉन्स्टर। सबसे बड़ा इंडिया का बनाया गया है और ये बहुत गेम चेंजर है, इंडिया के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर है। JSLV Mk3 और LBM-3, चंद्रयान-2 मिशन, चंद्रयान-3 मिशन, राइट, गगनयान। अब अगला जो हमारा मिशन है गगनयान। सो इफ यू लुक एट हियर, तो हमने इसको चंद्रयान-2 में यूज किया। इस सेम रॉकेट वाज यूज्ड इन चंद्रयान-2, वी हैव यूज्ड इन चंद्रयान-3 एंड नाउ वी आर प्लानिंग फॉर दिस गगनयान। गगनयान के लिए भी हम LBM-3 को यूज करेंगे। वी आर गोइंग टू यूज LBM-3, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट इन गगनयान मिशन वी आर गोइंग टू यूज क्रू मॉड्यूल। एक मॉड्यूल होगा जहां पर ह्यूमन एस्ट्रोनॉट विल बी देयर, है ना, ह्यूमन एस्ट्रोनॉट को वहां पर गगनयान के क्रू मॉड्यूल में रखा जाएगा। दैट वी आर गोइंग टू डू दैट सिमिलर टू सैटेलाइट। इन द अपर पार्ट विल कीप इट अ क्रू मॉड्यूल विद अ सर्विस मॉड्यूल। उसके साथ एक सर्विस मॉड्यूल भी होगा जो उसको वापस डीबूस्ट करेगा, दैट विल डीबूस्ट बैक टू द अर्थ। तो मैंने यही बताया ना कि हमारे पास अभी RLV नहीं है, ये एकदम ध्यान रखना है। इंडिया के पास कोई भी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल नहीं है, वी डोंट हैव। विल यूज सिंपली LBM-3 और JSLV Mk3 फॉर आवर मैन्ड मिशन, व्हाट इज कॉल्ड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट गगनयान मिशन, वहां हम यूज करेंगे, राइट। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि गगनयान मिशन में ये जो है 4 टन्स, मतलब ये जो रॉकेट है 4 टन्स, राइट, 4000 किलोग्राम payload. It can take the payload to this orbit called GTO, यानी कि जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, a kind of orbit what is called transfer orbit for communication satellite के लिए 4 टन या 4000 किलोग्राम कर सकते हैं। एंड वी कैन गो अप टू 8 टन्स, यानी कि 8000 किलोग्राम, 8000 किलोग्राम जो कि हम गगनयान के लिए यूज करेंगे। क्रू मॉड्यूल का पेलोड टू लो अर्थ ऑर्बिट, LEO, लियो। अगर हमें 400 किलोमीटर तक, 400 किलोमीटर तक में, तो हम इसमें 8000 किलोग्राम तक ले जा सकते हैं पेलोड। तो अभी जो गगनयान के लिए जो क्रू मॉड्यूल बन रहा है, जो उसकी कैपेसिटी बन रही है, तो हम वहां तक ले जा सकते हैं। क्योंकि गगनयान मिशन कहाँ होगा, लो अर्थ ऑर्बिट पे होगा, नॉट इन द हाई अर्थ ऑर्बिट।
अगर हमें हाई अर्थ ऑर्बिट चाहिए जाना है तो हम कितना ले जा सकते हैं, 4 टन तक, 4 टन तक। दिस रॉकेट इज इंडियाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रॉकेट हियर एंड वी नीड टू कीप इन माइंड देयर, है ना। ये चीज तो हमें ध्यान रखना होगा कि कोई भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट या कोई भी ऐसे सैटेलाइट हमें अगर जो स्टेशनरी ऑर्बिट पहुंचाना है तो 4 टन तक हम जा सकते हैं, 4000 किलोग्राम तक, यूजिंग GSLV MK3। इवन फॉर एनी स्पेस प्रोग्राम लाइक मंगलयान और चंद्रयान 4000 टन तक कम कर सकते हैं ट्रांसफर ऑर्बिट में। अगर हमें लोअर ऑर्बिट पहुंचाना है तो हम वी कैन गो फॉर 8000 किलोग्राम, डबल द कैपेसिटी, वहां तक कैरी कर सकता है। दैट इज व्हाट द LVM-3 has got the importance, है ना। LVM-3 has got the importance in that context. ये इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं लिख देता हूं, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। LVM-3 कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, तो यू शुड नो द स्पेसिफिक, जो मैंने भी स्पेसिफिक बताया है ये पता होना चाहिए। तो पहले बूस्टर ले जाता है ऊपर, फिर बूस्टर सेपरेट होता है, लिक्विड कोर इंजन, देन क्रायोजेनिक, इट गोज इन दैट वे, राइट। तो इफ यू लुक एट हियर, रिसेंटली जो है GSLV का, है ना, जो मैंने भी समझाया, GSLV का अगर देखा जाए तो इसरो का जो कई बार हेवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट का भी हम यूज करते हैं, राइट, वहां भी यूज किया जाता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक द इसरोज पार्ट ऑफ इट, राइट, अभी मैं इसरो का बताता हूँ। तो इसरो का अगर हम देखें यहाँ पर ISRO का, अब यहाँ पर GSLV, व्हेन यू गो टू GSLV ISRO, यू विल सी दैट लिंक हियर, दिस, ये Mark 2 है, ये Mark 2 है, ठीक है, ये Mark 2 है, stage 1 solid, and you can see here second stage is liquid. Can you see here Vikas engine? लिखा है ना, 1 Vikas engine is used in the second stage of GSLV, derived from where, PSLV। और यहाँ फ्यूल क्या यूज करते हैं, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन, एंड वी बर्न विद नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4। UH जो है अनसिमेट्रिक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, ये लिक्विड फ्यूल होता है, लिक्विड स्टेज में होता है ना। अब यहाँ पर आप देखो, ये थर्ड स्टेज क्रायोजेनिक इंजन, ये किसका है, MK2, Mark 2 में कितना है, 7.5 है, जबकि Mark 3 में कितना है, 25। Now if you see here this one, can you see here Mark 2 can go to 6000 kilogram lower orbit, ये Mark 2 का है। Mark 2 can take communication satellite to geostationary orbit by 2250, 2250 kilogram, ये GSLV MK2 है। You see here this is a GSLV MK2, ये जो है GSLV MK2 का है, GSLV MK2, ये उसका दिया हुआ है। एंड यू कैन सी द 4 बूस्टर, ये 4 है, यू कैन सी दिस 4, है ना, इसमें 4 लगाए हुए हैं। दिस इज Mark 2, दिस इज Mark 2। कैन यू सी हियर क्या लिखा हुआ है, स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स, क्या यूज करता है, लिक्विड, फोर लिक्विड स्ट्रैप ऑन मोटर्स, एंड अगेन इट इज derived from where, Vikas engine। The strap-ons are powered by 1 Vikas engine each. You can say 4 small Vikas engines have been put across the stage 1. See, what is stage 1 of GSLV MK2? Solid. उसके साथ क्या स्ट्रैप हमने किया, 4 बूस्टर को किया, 4 बूस्टर। और बूस्टर क्या यूज करता है, लिक्विड, इट यूज लिक्विड 1। समझ में आ रहा है कि जब हम GSLV MK2 किसकी बात कर रहे हैं, Mark 2 प्रीवियस डेरिवेटिव, तो वहां जो फर्स्ट स्टेज में 4 जो मोटर्स लगाए गए, स्ट्रैप ऑन किया गया है, वो लिक्विड यूज करता है। ये क्यों होता है, टू गिव मोर थ्रस्ट, इट प्रोवाइड मोर थ्रस्ट। कितना तक हम ले जा सकते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट, अप टू 3 टन, दैट मींस 2250 किलोग्राम, राइट। और अगर हमें लोअर ऑर्बिट पहुंचाना है तो 6000 किलोग्राम।
वहां तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर है, ये चीज जो मैंने बताया। नाउ if I go to the next one here, let's look at this Mark 3. ये Mark 3 है, you see the Mark 3. ठीक है, तो पहला क्या है, कोर इंजन क्या है, लिक्विड 110, डेरिवेटिव विकास इंजन। फिर यहाँ क्या है, सॉलिड रॉकेट बूस्टर S200। कितना हम यूज करते हैं, 2, we use 2 of them। LBM3 uses 2 S200 रॉकेट, है ना। और यहाँ फ्यूल क्या है, STPB, हाइड्रोक्सी है ना, टेट्रा, ये पॉलीब्यूटाडाइन होता है। और ये कोर इंजन है, लिक्विड। नाउ यू सी हियर दिस वन, एंड नाउ यू कैन सी अपर स्टेज क्रायोजेनिक्स 25 C25। ठीक है, एंड देन यू कैन सी हियर लोअर ऑर्बिट, हाउ मेनी किलोग्राम, 8000 किलोग्राम। एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट हाउ मेनी किलोग्राम, जो स्टेज ऑर्बिट कितना, कितने किलोग्राम ले जा सकता है, 4000 किलोग्राम, ये बताया ना, 4 टन। एंड अगर लो अर्थ ऑर्बिट पहुंचाने कितना है, 8000 किलोग्राम। दिस व्हाट आई हैव टॉक्ड, दिस व्हाट आई हैव गिवन हियर, 600 किलोमीटर तक ले जा सकते हैं। एंड यू कैन सी हियर दिस द 44 मीटर, कितनी हाइट है, 43.5 मीटर, ऑलमोस्ट 44 मीटर्स। एंड व्हाट इज द टोटल मास, 640 टन्स, यही मास है ना। दिस व्हाट यू सी हियर, दिस आर द बूस्टर, राइट, ये जो है बूस्टर है। See here, this is the booster. What you see here, this is the S200, the booster here. And you will see here this one, the liquid L110, जहां मैंने क्लिक किया है। And then you can see this is the cryogenic, ये cryogenic है। And here, what you see here, this is the payload, यहाँ payload होता है। Here we keep the payload here। ये ना JSLV MK3, इसको बोलते हैं LBM3। What we call it is a LBM3। This is what I mentioned here. This is what I have mentioned here. Right? तो ये स्पेसिफिक, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये फैक्ट्स को याद रखना है, many of the facts you have to remember that. And what I've said, small satellite launch vehicle, SSLV. Now SSLV, when you come to SSLV, SSLV is nothing but a derivative of sounding rocket, जो मैंने बताया छोटे सैटेलाइट्स के लिए जो है। तो SSLV पे look at SSLV ISRO, you should always remember that जब भी कोई भी चीज आप पढ़ते हो, go to the ISRO site। करंट अफेयर का मटेरियल वो अलग चीज है, न्यूज़पेपर का अलग चीज है, ये चीज है। कितने स्टेज है यहाँ पर, सी 3 स्टेज गिवन। द लास्ट स्टेज जो होता है ना, ये चीज जो है, स्टेज 1 सी सॉलिड, स्टेज 2 सॉलिड STPB, there is no fuel, stage 3 solid, all these 3 are solid। And then it can take the, see here, what is main purpose, nano satellite, micro satellite, mini satellite, and how much it can carry, 500 kilogram, 500 kilometer planar orbit, and 3 multiple satellite ranging from 10 kilogram to 300 kilogram into 500 kilometers, है ना। तो इसकी कैपेसिटी की बात किया जाए तो 500 kg का सैटेलाइट 500 किलोमीटर के ऑर्बिट तक SSLV पहुंचा सकता है। और इसमें सारे के सारे क्या है, सॉलिड, ऑल आर सॉलिड, नो लिक्विड, देयर इज नो लिक्विड इनटू दैट, ऑल आर सॉलिड हियर। और ये जो STPB है, ये जो है, ये जो आप नाम देख रहे हो, ये चीज STPB, दैट इज द नेम ऑफ द फ्यूल, हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, दैट इज द नेम ऑफ द केमिकल फ्यूल जो हम यूज करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है सेकेंड स्टेज अगेन, थर्ड स्टेज अगेन। एंड नाउ इफ यू लुक एट हियर, दिस इज द पार्ट, ये चीज है इसका ऑन डिमांड जो है, वी कैन यूज दिस वन।
on demand we can use this rocket. जब हमें छोटे सैटेलाइट को लॉन्च करना होता है, when we have to launch the small satellite here, see is given here. क्या लिखा हुआ है? 3 stage, 3 solid propulsion stage, और एक और है लास्ट स्टेज. सी हियर, एक और चीज याद रखना है, ये लास्ट स्टेज है. कहने मतलब लास्ट में लिक्विड यूज होता है. कैन सी हियर वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल है ना, बेस्ड ऑन, यह दिया हुआ है यहाँ पे न्यूटन, जो 50 न्यूटन है ना थ्रस्टर्स होते हैं, विद 8 नंबर का होते हैं, 50 यहाँ पे दिया हुआ है, और ये हाइड्रोजन यूज हो रहा है. कहने का मतलब है कि ये जो लास्ट में जाके यहाँ पर इस जगह पे लास्ट में जो है, ये जो आप देख रहे हो, मैं समझाता हूँ क्या चीज है. ये जो आप देख रहे हो ये चीज, ये भी रॉकेट है, ये लिक्विड है. सी हियर आई विल एक्सप्लेन अगेन. ये आप जो देख रहे हो, ये पहला स्टेज है, फर्स्ट सॉलिड, अगेन सेकेंड सॉलिड, थर्ड सॉलिड. तो नाउ व्हाट यू सी रेड इन कलर, ये जो आप देख रहे हो सर, तो पहला 3 जो है सॉलिड है. उसके बाद जो लास्ट में यहाँ पर जो आता है, ये जो है लास्ट में, ये जो आप इंजन देख रहे हैं, दिस वन, ये लिक्विड है. और यहाँ सैटेलाइट है, दिस इज सैटेलाइट देयर, हियर वी कीप द सैटेलाइट. दैट मीन्स सर, लेट मी एक्सप्लेन हियर. अगर अगर एग्जाम में आता है ना, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, अब ये समझो, यहां पर जो है now this is liquid, and here we keep the payload. ये पेलोड है. ये जो इंजन आप देख रहे हो, दिस इंजन इज ऑल्सो इंजन, ये थ्रस्टर है. इसको काम क्या है? टू रिड्यूस, इसका काम है टू रिड्यूस द स्पीड. टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं. देन व्हाट कम्स हियर? देन कम्स हियर दिस वन. This is the PS3. Third stage. And what is here? Solid. Then after that you have another one. This one. Again, this is the solid. See, we always count from bottom, है ना? हम लोग हमेशा बॉटम से काउंट करते हैं. ये सेकेंड स्टेज है. अगेन व्हाट टाइप ऑफ फ्यूल? सॉलिड. And what is the last stage? Here again you have one more engine here. The PS1, first stage. Again solid. We again use a solid one here. So that means this is the first, this is second, this is third. So one by one it goes. Here we have a launch pad. Here, when it is the launch pad. On the launch pad, when you keep it launch pad, we always count from the bottom. And how much we can carry here? Maximum, how much is that? Maximum is 500 kg. That will be the payload. What is payload here? Payload will be here, satellite. This satellite we can carry it. That is kept here.
in this box, right? And up to what height we can go? We can launch up to 500 kilometers. Orbit we can go there, right? Up to 500 kilometers orbit we can reach, right? तो वहां पर ये चीज है. और क्या बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर है, यहां पर हमने क्यों बनाया कि हमारे जो कस्टमर्स हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं स्मॉल सैटेलाइट वाले, उनको लॉन्च करने के लिए, ठीक है. दिस व्हाट वी हैव डेवलप्ड SSLV, वहां पर उसके लिए हमने लॉन्च किया. सपोज करो आप, सपोज अगर 10 किलोग्राम सैटेलाइट है, तुम कितने सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं? 50. और अगर मैं स्मॉल सैटेलाइट बोले, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ स्मॉल सैटेलाइट, जो स्मॉल सैटेलाइट होते हैं, यू टेक स्मॉल सैटेलाइट ऑफ 150 किलोग्राम, है ना, इसका अगर वेट है 150 किलोग्राम वेट है, तो वी कैन लॉन्च how many of them? Three satellites can be launched. Suppose one satellite, small satellite weigh 150 kilogram. Then how will be 450 kilogram? 450 kilogram. We can have 450 kilogram. तो उसको हम लॉन्च करा सकते हैं. We can launch 450 kilogram. Now suppose if you have 50 kilogram, suppose you have 50 kilogram, तो कितना सैटेलाइट लॉन्च हो जाएगा? If you have 50 kilogram satellite here, तो how many satellite we can launch by using SSLV? कितना हम लोग कर सकते हैं? How many we can launch it? 10. 10 satellite we can launch by using a single rocket, right? इसको बोलते हैं मिनी सैटेलाइट्स, स्मॉल, मिनी, माइक्रो, है ना, ये मिनी सैटेलाइट है. Something called mini satellites. So 15 किलोग्राम, तो कितना लॉन्च होगा? How many satellite we can launch? Let's say micro satellite. If we are going to have micro satellite, तो कितना लॉन्च आप कर सकते हैं? 15 किलोग्राम. How many satellite we can launch? Tell me the number. It can go up to 500 kg here. We can launch how many satellite? बहुत आसान है. We can launch up to 33 satellites. Am I right? 33 satellites. 10 satellites 150 kg. 20 will be 300. 30 will be 450. And 45 will be 33 satellites. Now what about nano satellite? जो nano satellite है, suppose we have a 5 kg satellite here, 5 kg satellite, nano satellite. So how many satellite we can launch? Nano satellites. If we have nano satellite, how many satellite we can launch? Nano satellite. Hundred satellites. We can launch hundreds of satellites by using a single rocket. कई बार होता है ना CubeSat. What is CubeSat? 1 kilogram. Just 1 kilogram. Sometimes, student satellite. Just 1 kilogram. Up to 5 kilogram is a nano satellite. Now suppose 1 kilogram, we can have more. So that will help India earn revenue. हम पैसे कमा सकते हैं ऐसे फॉरेन सैटेलाइट को लॉन्च करके. ये हमारा मेन पर्पस है. द मेन पर्पस ऑफ मेकिंग SSLV इज दिस. And is based on which technology? Based on which technology? ये important है. Again, this is important for the exam.
you could get question in the exam. Is based on which technology? मैंने भी क्लास में बताया, sounding rocket. This is based on technology called sounding rocket technology. Sounding rocket technology पे based है ये. इससे पहले मैंने आपको sounding rocket बताया. First I talked about sounding rockets, right? So that you are able to understand this one. It's a very important thing which has been in the news. ये news में रहा है, इसलिए ये बहुत important यहाँ पर है, which you have to be aware of it. And I think with the diagram you are able to understand very better. Diagram से सब कुछ समझ में आ रहा है ना? You are able to understand the thing here. और मेरा मानना ये है कि अगर आप कोई भी चीज अच्छे से समझ के पढ़ जाए, आपको याद हो जाएगा, आपको भूलेंगे नहीं आप. You'll never forget. Suppose in the prelims exam the question comes in the exam, I'm very sure you will be the first to answer it with full confidence. आपका full confidence होगा और आप गलती नहीं करेंगे. आप एक बार में आंसर कर लेंगे. You'll be able to do it in one go. समझ में आ रहा है? अब आप भूलोगे नहीं आप कि SSLB क्या होता है. ठीक है? Okay, I'll do one thing here. मैं एक काम करता हूं. कई लोग चुपचाप सुन रहे हैं, देख रहे हैं. Are you copying this one? भानु, how are you, Bhanu? Fine, sir. Bhanu is my follower. He always. Fine, sir. Yes, Bhanu. Yes, sir. Yeah, I'm fine. You're in yes, the sir. library. Yes, sir. But low voice I'm talking. Don't share to your competitor. Yes, Don't sir. I share am to not. your competitor. उनको कुछ नहीं Yes, sir. पता. I'm just joking. I'm just joking there, right? मैं मजाक कर रहा हूँ. I'm just joking there, right? So Yes, sir. you are a nice student. You are a hardworking student, very sincere student, and like Bhanu, all Bhanus are here. भानु भानु मतलब क्या होता है? क्या होता है Sun. मतलब भानु का? भानु मतलब what? Sun. Yes, sun. Bhanu is sun, Aditya, right? Yes. Sometimes you give Yes, the sir. name Aditya, Yes, sir. right? You all are there. So that's what I'm trying to make you understand that. Nothing to worry. This year exam will be simple for all of you. Yes, आप sir. सबके लिए बहुत सिंपल होगा. डरना नहीं है. डरना बिल्कुल नहीं है. You never have to be scared of. ठीक है? Sir. And I'm very sure you will be able to qualify prelims exam. With all your patience, you are working very hard. You are working day Yes, and sir. night. Yes, You'll sir. be able to do it. But Bhanu, are you able to understand here? Yes, sir. Okay. One minute. I'll do one thing here. I'll do one thing here. I'll hide it this one. Okay. Now I come there. Bhanu, without looking, tell me what is SSLB. Without looking, just tell me what is SSLB. Small satellite What all thing launching you know, vehicle. you have learned about SSLB. Small satellite launching Correct, vehicle. good. It is a 4-stage vehicle, and it has 3 Good, very solid good. stage and 1 liquid stage engine. Right. Yes. And we can send satellites like different kind of like weights, like 50 kg, 15 kg, 5 kg, like small, micro, and nano. nano. Yes. That we can launch, mini, micro, and nano. We can launch there, right? How much maximum payload we can launch? Or weight of the satellite? 500 kg 500. of satellite. 500 We kg can go of up to satellite. 500. याद रखना है 5. Yes, sir. आपको याद रखना है 1 2 3 4 Yes, sir. 5 500 kg. And again, Yes. how many kilometers? 500. 500 kg, 500 kilometers. 5 kilometers. Right? And Yes, what sir. kind of orbit? Planar orbit. Nano. Right? Planar orbit we can place. Yes, sir. Correct? And another thing, based on which technology? Sounding rocket. Sounding rocket. They're based on the sounding rocket technology. Sounding rocket. Right? Everyone Yes, sir. understood? So now I'm taking your this कहाँ पर है chat box. Chat box. Yes. Sir, I have a doubt. Like, can we send like small, medium, and Yeah, micro please lab? ask. Can we send all kind of like rockets one at a time, like in SSLV only, like small, micro, and medium, and nano kind of satellite one at a time, or we can send one No, individually? no, it can be combination also. It can be combination also. Like depending on our requirement, we can combine them. Okay. So
That means we can have any size, like 15 I've given, that means up to 15 kilogram. 15 kilogram, that is called the micro. Nano is up to 5 kilogram. But sometimes, cube set. It can be 1 kilogram. Like what is Bhanu is asking there. Let me share you one very important Kalam set. Kalam set V2. V2. That was a student satellite, right? I'll just show you that. Kalam sat V2, which is the just like on the palm. On the palm, we can keep it. We can just keep it on the palm. Students from Tamil Nadu, they were Kalam sat, named after Dr. Kalam here. So let me just show you this Kalam sat here. It was in the news now already more than 2 years. है ना, कलाम सैट का न्यूज में अब टाइम हो चुका है, क्योंकि इसमें बहुत पहले था वो न्यूज में, ये चीज है, बहुत पहले न्यूज में था. It was earlier in the news. See here. ClamSat V2 is a student payload, is first to use fourth stage of the PSLV. PSLV was used there, right? And can you see here mass 1.2 kg, 26. It is a very small one. I show you the image. It just you can keep on the palm. These are the students, right? These are the students who did that. We have one company. We have a company. These are the students. You can say. What you see the girl, the woman in between. The woman what you see here, her name is Srimati. She is the owner of a very important company, Kids India, Space Kids. What is the name of the company? Space Kids. Same company has made Ajadi Sat. The satellite called Ajadi Sat. And what you can see this boy. Can you see this boy at the back? His name is Shahrukh. सबसे last में, सबसे पीछे में, back side. Shahrukh made this one. See here, this is the satellite. It can be kept on the palm. You can just keep on the palm. See here. This is called CubeSat. Now imagine if we have a 1 kilogram satellite, then we can launch thousands of them. We can launch thousands of such satellites. Right? You can see here, India Science is given here. And they all done. This is the, she is the person. She is the owner of what is called as a Ajadi Sat was also there. I'll just take you to this one. It's called Space Kids India. Space Kids India is a startup company in India. Right? This is the Space Kids. They've developed Ajadi Sat. 75 years of India's independence. Ajadi ka Amrit Mahotsav. We launched, Ajadi Sat made by 75 schools in India. Right? We developed this satellite there. 750 girls. Imagine that. 750 girls from 75 schools throughout India. They built the Ajadi Sat. This is the name of the company what you come across. And they have developed here. Right? You can go to the home here. It is opening here. It's a Tamil Nadu based startup, space startup. Kalam Sat was built. It's already old news. Kalam Sat का already बहुत पुराना न्यूज है. अगर आप इसको इसरो का अगर आप देखते हैं तो ये बहुत पुराना न्यूज है. PSLC 44 का यूज किया गया था. ये था it was launched in I think 2022 में launch हुआ था. Now see who made ClamSat V2. Can you see here? What is the name of the company? Space Kids. Can you see the name of the company? Space Kids India. And can you see the name of that woman? Srimati Kesan. Srimati Kesan. That woman, what you have seen here, that woman, that's her name is this one. This is the website. Space Kids India. Right? So they have created this one. See, only organization to launch 19 satellites. And you can see here this, they have
They have played a very important role. I think, I don't know from where the sound is coming from. Are you able to see the video? No. You're not able to see the video? Okay. I'll take you to YouTube channel there. There you can see it. Its entire journey has been shown here. You'll be able to see it. Ambassador to NASA. There's a balloon. Was it? India. CAYANP. Right side. One side. Now they're also building rockets. They're also helping to, ISRO is helping them to build rockets. And the students from this organization, they go to Syria, they go to watch all this. They are the first customer side that they compliment and congratulate. And that boy you can see behind the one. That boy is the main architect. Azadi sir. SSLV D2. This is SSLV. This boy, his name is Saruk. Saruk Naam is there. He's from Chennai. Main architect behind it. Right? So one Indian woman who might in future can go, right? We have dream also there. Gaganyaan mission, first time we are sending 3 Indian astronauts to the outer space. Now this has changed the entire area of space program in India. And now, ISRO has built a company called NSIL, New Space India Limited, a private venture of ISRO. They are supporting the young startups. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज को ध्यान में रखना है ना. दिस इज वेयर यू हैव आजादी सेट वगैरह जितना भी है, ये सारा जो है इसमें पार्टनर्स है, राइट. व्हाट इज गिवन हियर. तो दिस टॉपिक इज बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट आई मेंशन हियर SSLV, that becomes really very very important. ठीक है. Now what will come here, now I'm getting to another one here, another very important thing here, Gaganyaan mission there. Let's understand about Gaganyaan mission. Now this is another topic here. Another important topic where is India's first indigenous
right? Indigenous human space flight. Human space flight. See, initially we planned for 5 years of India's independence, but because of the COVID, Corona time, pandemic, COVID, we extended this time for that. We're still working on that. So first, and what is very important here? So GSLV, MK3, what we call as a LBM3, this rocket to insert. What we'll have here? Crew module with a service module. We'll have one crew module where human astronaut will be there, and there is service module. Into, we have planned for 200 to 300 kilometers. That is a low Earth orbit. That is what our plan is there. There, the crew module. That means, it will be like this. If I draw the diagram, this module will be like this. There will be this rocket. This tiny, you'll find here, tiny rocket will be there. And this is the crew module. Three Indian astronauts. What is this called? Vyomnauts. This will be placed in this crew module. And we'll also have this one, booster. So here, this will be carried. Now, this will be carried by LBM3, just like a satellite.
Am I audible to everyone? Yes, sir, you are audible. Yeah, because what happened, my laptop got the battery is discharged, just got switch off. So I was discussing about this Gaganyaan mission. Let me share if I can. Only the host can share the meeting, okay? So I don't have the right to know. So anyway, what I was saying that Gaganyaan mission, right? Or let me just try to see if I can restart my. Excuse me, sir. laptop. Ariman, Yes. please make sir host. Yeah, if I'm the host, then I'm able to share the screen. एक्चुअली सर के ऑप्शन पे को-होस्ट का ऑप्शन नहीं है। प्रतीक्षा जी, मैंने आपको होस्ट बना दिया है। Sir, you are the co-host now. Now you can share the screen. Okay, just 1 second. Yeah, that I got it. All right, all right. I got the point. Just 1 second. Let me just see here. All right. Just a second. I'm trying to share the screen. Can you see anything? No. Is there a screen seen there? No. Are you able to see my screen? No, sir, this is not visible. 1 second. I'm trying to connect through my iPad. Okay, sir, Let sure. me see if. Let me see if it can get connected. Is it visible? Yes, sir, it's visible now. No, but can you see my written iPad? Yes, sir, No. yes, sir. No, where I was writing Gaganyaan. वो दिख रहा है क्या? जहाँ गगनयान अभी क्या दिख रहा है No, आपको sir. स्क्रीन में क्या दिख Sir, it's showing the home. You are sharing a screen option. रहा है? That is not coming here. Okay, just 1 second. Now, can you see here? Yes, sir. क्या दिख रहा है? Can you tell me? Now it is You can visible. see Gaganyaan mission. Can you see Gaganyaan mission now? No, whatever my handwritten. Are you able to see the handwritten? Yes, sir. No, the iPad. Whatever I've written iPad. Can you see the photograph also? Yes, sir, yes, sir. Okay, okay. Now let's look at it. Just 1 second. So I'm writing something. Can anyone tell me what I've written? So 3. Hello? Good, very good. So, all right. So let me go into that. See, when you talk about Gaganyaan mission, so around 200, 300 kilometer low Earth orbit, we are going to place crew module with the service module. Now, what is very important? Let me just mention here. So, this Indian astronaut, what we call as a Vyomnaut. Recently, there was one video which went viral, the training program, right? Are being trained, and you know that from Indian Air Force, right? Why Indian Air Force? Why they have been set from Indian? Because they are the people who are able to adapt. They are trained to work with anti-gravity. You know, G suit, with something called G suit or anti-gravity, and they are trained pilots which can work on the system there. So 3 bombnauts are being trained from IAF. Now, what is given here? We are taking this entire program, right? That is in collaboration,
here the training program. Training with the help of, so one is Russia, and second we are taking also with France. They are helping us in the training program there, right? Now another thing here, what is very important, ISRO successfully carried out pad abort test there. Successfully. Now what is pad abort test? Let me tell you here. Carried out pad abort test. PAD pad abort. Now what is pad abort test? Launch. If something goes emergency, so they will be able to abort the mission, right? अगर मिशन के दौरान जब उसको लॉन्च किया जाएगा श्रीहरिकोटा से, अगर कुछ ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है, टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, तो इसको वहां पे अबॉर्ट किया जा सकता है मिशन को, तो उसका सक्सेसफुल टेस्टिंग किया गया है. एंड व्हाट इज अनदर थिंग हियर, इसरो राइट is carrying out one unmanned, not the manned, unmanned atmospheric जो बोलते हैं atmosphere. I have to come back to the earth. This re-entry test there, and the re-entry test that is being carried out. So ISRO is successfully trying to carry out re-entry test here. So that's where this particular program, that is what we are able to do it there. अच्छा वो सेव नहीं हो पाया, तो उसको जस्ट आपने कॉपी कर लिया वो pad abort test and re-entry test that disappeared from here. So anyway, Yes, sir. so how the pad abort test and the re-entry test. There's a mission called CARE, right? There's something called CARE mission. CARE. Now, what is CARE mission? It's called Crew Atmospheric Re-entry. So this we have already done 2 times. जहाँ हमने 2 बार हमने ऐसा कर रखा है जहाँ पर successful re-entry into atmosphere. So what is our plan is that first we'll use this one GSLV, right? Will carry on, will go into atmosphere. That crew module, right? Crew module will be launched here, and then this crew module will again return back. That means it will just for some 2 days to 3 days, this will be again deboosted. There will be deboosting. Excuse me, sir. And then it will be coming to the ground, right? So your voice is lagging. Just 1 second. Sometimes. And then we'll use a system of parachute. Okay. We'll be using this kind of a parachute system. Parachute system. And then it will be landing on the sea. We will land on the sea and ocean. This module will be falling to the sea. Can you see the photograph? Is it visible? Yes, sir, it is visible. Did you get the idea? What is the idea? GSLV Mk3 or LVM3 will just take this crew module to the outer space. This is the space here. And they will stay in the space, and then we will deboost. And when it comes to the atmosphere, to the parachute system, which will bring it down to the sea and ocean. And then we recover the module. That is what we are planning for it. Right? This way, the entire mission will be carried out. So here, same kind of mission, Yuri Gagarin, the first man to go to outer space, he went by the same kind of approach there. So we will be having the same approach in this case also there.
तो हम लोग सेम अप्रोच से यहाँ पर इस तरह से करेंगे, जो सेम अप्रोच जो यूरी गैगरिन का था अर्थ पे, जो कि 19 लॉन्ग वेव 1961 में किया गया था, तो नाउ सेम थिंग इंडिया इज गोइंग टू कैरी आउट देयर. दिस इज व्हाट we are planning for this kind of a mission there, right? All right. All right, so I'll do one thing here. What I have just mentioned here, I'll again get back to it. Yes. Can you now see me? Now laptop is started. लैपटॉप बंद हो गया था, फिर दोबारा भी मैंने स्टार्ट किया है, तो लैपटॉप हैज स्टार्टेड नाउ. तो नाउ यू ऑल कैन सी मी नाउ. आई एम बैक हियर. सो व्हाट आई एम सेइंग हियर, दिस mission will be very challenging mission. Just like Aditya mission was a very challenging mission, this mission is going to be a very challenging mission, and we are going to again, right, do this mission in a successful way. What I brought here, right? This is what we are planning for this. और इसके लिए पैड अबाउट टेस्ट, प्रॉपर ट्रेनिंग, फिटनेस टेस्ट, मेडिसिन, ऑल मेडिसिन व्हाट इज रिक्वायर्ड, all the aspect is being done now. So we have planned for 2025, and there is slowly we'll be getting to this particular one. इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग डायमेंशन है, that here we will be using Vyom knot. The Vyom knot is Vyom Mitra. What is Vyom Mitra? Anybody who can tell me? ISRO has developed this Vyom Mitra. What is Vyom Mitra? Is a humanoid, is a semi-humanoid, half humanoid robot. नहीं, ये humanoid robot है. Only upper part of the body, only upper part, not the bottom. That is where to assist, है ना? That is developed to assist astronaut, right? It will accompany the astronauts to the outer space, Vyom Mitra, right? Human space flight. Now, what is a very important thing? Why we are doing Gaganyaan mission? क्यों हम लोग कर रहे हैं Gaganyaan mission को? What is the main purpose of doing? Why we are carrying out Gaganyaan mission? Yes, Tripurari Sinha, can you unmute yourself? Yes, Tripurari Sinha नहीं है, ठीक है. हम क्यों करना चाहते हैं? Why we want to do it? Why we want to do Gaganyaan? क्या इंडिया को क्या मिलने वाला? What India is going to gain from such kind of mission here? Tell me, why we are doing? Pravir Das, can you unmute yourself? Okay, I'm seeing your chat box also. Yeah, it's the robot. Yes, right. As you are in library there, Tripurari is in library there. Okay. Nagmani, can you unmute yourself? I can see your photo. I can see you. The moment you came on the screen, I am able to see you now. Yes. There's Nagmani. Can you tell me what is the purpose of Gaganyaan mission? What do we want to achieve with Gaganyaan mission? Acha, you are not aware. Not a problem there. I'm seeing your chat box there. Okay, Dipesh has given the answer, space tourism. Space tourism will be after some time. And also the part of space exploration, yes. Upcoming space station, yes. We'll build the space station. But we are going to do the testing of technologies there in that part. Right, we are going to do the testing of that. So what is the main purpose? Let me tell you here. The real significance of this program, right? The real significance
this is one is that to conduct, right? We are going to conduct microgravity experiment. This all astronaut will be conducting microgravity experiments. There a lot of module will be there, right? Those experiments will be done there because gravity there will be lesser. So one is that they are going to conduct experiments. Second thing is that again to conduct space studies. They'll also do some kind of a space exploration or space studies will be carried out. And exploration will be done by these 3 astronauts. They've been trained to use the system and get all the data there, that they are going to do it. Third thing is that in future, right, in future, this kind of mission, right, manned mission, this can pave way to the future manned mission to construct space station. I have already mentioned that India is going to build space station. So after doing successfully Gaganyaan mission, the Bharatiya Antariksh Station or India space station will be built. After that, whatever manned mission will do it. इस मिशन को पूरा करने के बाद, गगनयान को सक्सेसफुल करने के बाद, फिर मैन्ड मिशंस होंगे जहां हम स्पेस स्टेशन बनाएंगे. We'll build our space station. And I've already said that we are going to start from 2028 and by 2035 we'll complete the space station, India space station. So for that, Gaganyaan is very, very important. That will pave the way for future space manned mission to build space station. That part of it. Again, what is another thing here? There's another thing is this one, to motivate. It has a symbolic meaning also there. To motivate youths of the country to participate in space program. Another long-term program will be that the youth of country, right, they may take interest in the space program and they become the part of such programs in future. Maybe India in 2047, 100 years of India's independence. We may have many such kind of missions and many youth of India will go into part of it. And again, there's a collaborative project. There's a collaboration with many scientists, with multiple institutions. For scientific study, multiple institutions, they are collaborating with this mission here and scientists there. Let's say in the field of astronomy, in the field of astrophysics, right? Collaboration with multiple institutions and scientists. That will be another important objective of this Gaganyaan mission, right? We will be able to do that one. And it is also going to help boost our image, right? One more angle I can tell you that if we are successful in this one, so India can, like here, India can provide manned mission service to foreign countries. Like as we launch, right? As we launch foreign satellites, maybe American astronauts can be taken to ISS, International Space Station, by India. Or let's say we can help other countries to reach outer space, can provide manned mission service to foreign countries, foreign entities. And even there is another thing here that to right help in future space tourism. That could also be one of the economic angle, you can say. Gaganyaan mission is just the beginning, right? It can also have the space tourism angle there in future there. Another economic angle is that to build all systems, facilities, components, we have to build a space suit, then all the kind of environment where astronauts will be living in that outer space, that microgravity environment. So that will also build scientific research in India. That means engineering, technology, research, right? First time India is going to do this. So whatever system will develop, whatever
components will develop. That will be again indigenization of India's program of space program manned mission, and will build up such system there. Space suit, space food, space food, space medicine. That again will have a market value. It will also generate employment. I can tell you many such points. It can also generate employment in industries, which will build such kind of system. And already doing that. अभी हो भी रहा है. जो गगनयान का पूरा तैयारी चल रहा है, उसमें जो जो पार्ट कंपोनेंट है, जो हम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, है ना, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, तो उसमें हमारा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है. वी आर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो देयर इन दैट केस देयर. So that is the economic angle which you can say that is a part of this program there. So, right. So this one, microgravity experiment, conduct space studies exploration, in future manned mission to construct space station, motivate youth to participate in space program, to collaborate with multiple institutions and scientists. Then India can provide manned mission service to foreign countries, help in future space tourism. Many such points you can write in where? Mains exam. In mains exam you can write there. Correct? Is it clear to everyone? So we have discussed up to this one. I know that 2 hours is very less time. 2 घंटा बहुत कम टाइम है. Right? मैंने बताया कि मुझे I can teach you 10 hours. Right? So for me, right, 2 hours is nothing. I can keep on teaching. I can keep on teaching you continuously. Many things I can teach. Right? तो वही चीज है ना कि institution 2 hours. So that's what already 4:18 is there, and you कई लोगों का offline class भी होगा. Many of you will have offline class. So that's what I have to stop my class. So we have discussed up to Gaganyaan. So what I'll do tomorrow, I'll discuss Nisar, then we'll go to Chandrayaan, Mangalyaan, all those kind of mission is there. ठीक है? So आज हम लोगों ने जो क्लास में पढ़ा है, मैं कल रिवाइज भी कराऊंगा. I'll revise those topic, right? So that you are again, if you missed out, you can go ahead with that. All right. Shall we end the class? Yes. You all are able to follow me. What I'm trying to say that today I've discussed many important topics. SSLV. I've gone to Gaganyaan. I have discussed about that for GSLV MK3. All these topics are important. Good. Right. That's really good. Right. I'm very, very glad there. Okay. Because since most of you are from English medium background, that's what I'm using the English as a primarily. लेकिन कुछ लोग यहाँ हिंदी मीडियम के भी हैं, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए मैं हिंदी में चीजों को समझा भी दे रहा हूँ, ताकि वो जो लोग हिंदी वाले हैं, आई थिंक 30-35% हिंदी वाले होंगे, तो उनको भी एक सपोर्ट मिल जाए. तो उसके लिए मैंने हिंदी में भी बताया, लेकिन ट्राई करना है वहां पर है. लेकिन मैं आई थिंक दैट विल बी, लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो चीज को आपको फॉलो करना है, समझना है वहां पर. ठीक है? So I think that will be really help you out there. But most of your English medium background, that's what I'm trying to do it in English medium also there. So there are many students from South India. That's good. So I'm going to Trivandrum next week. If anybody is in Trivandrum, you can meet me. Okay, thank you, Uma Bharti. She is having the praise here that able to understand there. That's really good. Bhubaneswar, Rasmita, I will be coming in the month of March. 3rd March, I will be in Bhubaneswar. 3rd March, I will be in Bhubaneswar there. I am now in Jaipur. I'm right now in Jaipur. Right? अभी मैं जयपुर में हूं मैं. I'm taking the class from hotel room. This is the hotel room. I'm staying in the hotel room, and there I'm having this online session with all of you. Okay, you have some doubts. Now I'm seeing because when I was teaching, then I have a doubt. Can anyone tell me the doubts here? This Sejal Soni, can you write your doubt again? To demonstrate indigenous capability to undertake human space flight. ठीक है? 3 points that got disappeared. वो कुछ टैब में प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो चीज वो डिसअपियर हो गया. रिपीट करने का अभी था, तो मैंने रिपीट कर दिया है.
अगर कहीं रिपीट का है तो आई थिंक दिस लेक्चर इज गेटिंग रिकॉर्डेड ऑल्सो. ये लेक्चर रिकॉर्ड भी होता है. यस, मैनेजमेंट से कोई बता सकता है? तो अगर किसी का मिस हो जाता है, हाँ, इफ somebody miss out, then you can go to the recorded video also. ठीक है. वो एक लड़की है, सेजल का नाम का है वो, उसका मैं देख रहा हूँ डाउट. उसका डाउट तो मुझे दिख नहीं रहा है सेजल का. ओके. सो सी मीटिंग विथ मी इज अ वेरी डिफिकल्ट वन, है ना, क्योंकि मैं इतना बिजी रहता हूँ कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता. क्लास के बाद वहां होता है और बहुत सारे काम होते हैं. ठीक है. हाँ, मैं अभी मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं बताऊंगा वेयर आई एम टीचिंग राइट नाउ. सो इज वन ऑफ द वेरी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट इन द फील्ड ऑफ IIT नीट. ठीक है. तो आई एम देयर इन द राइट नाउ, आई एम टेकिंग द क्लासेस देयर. तो अभी तो इस वीक आई वॉज फ्री इन द आफ्टरनून, देन इवनिंग आई हैव गॉट द क्लास. तो अभी जो 2 से 4 का टाइम है, 2 to 4, so that's what I'm able to spare time and come to the live session to teach you all this one, right? मिलेंगे, ऐसा नहीं है. जो लोग जयपुर में हैं वो मिल सकते हैं. यू आर ऑलवेज वेलकम, right? Which technology we don't have, as it was said by China when we were successfully in Chandrayaan, we didn't have a RLV technology, reusable launch vehicle technology. Now what is RLV? It goes like a rocket, but it comes like a aeroplane, like a NASA. NASA has a space shuttle that goes like a booster, like a rocket, and then you have a aeroplane, a fighter jet, which come back to the atmosphere, fly like an aircraft, and land on a runway. On a runway it land. So US, Russia, and China, they have this technology. They go like a rocket, booster take it to the rocket. You have aircraft. The astronauts are in the aircraft, and then when it comes back re-entry, then that aircraft return back to the earth, and just like a fly like an aeroplane and land on a runway. So that technology we don't have. We're working on that. Sejal is asking a question here. Sejal Soni, that is asking the question there. But we are developing the technology there. Chandrayaan 3 mission, Vikram lander, we use the deorbiting kind of a context of D-booster, which brought the Vikram lander to the south pole of the moon. Same kind of a technology we are going to use for Gaganyaan. The crew module will be de-boosted, and then with the parachute, when it comes to atmosphere, parachute, and then finally it will land on the sea. Sea will become the landing site, sea and ocean. All right. Any other doubt is there? Nomenclature, Richmond, that person is asking that. In Gaganyaan mission, only the crew module will be out. Crew module with the service module. There will be service module along with the crew module. Yes, one more thing is that if you have any doubt, please raise your hand. You have a button there in the Zoom meeting. You have a signal where you can raise your hand. I will know which person is asking me doubt, right? In future, you have any doubt, you raise your hand. I'll be able to address your doubt. Microgravity means very low gravity. When we are on the earth, we are, because of Earth's gravity, we are able to stand, we are able to walk, we are able to do every activity. But as we go up in the space, the value of G decreases. आपने देखा होगा लोग हवा में तैरते हैं, है ना, पैर जमीन पे नहीं रहता है. तो माइक्रोग्रेविटी मतलब जो ग्रेविटी की जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कम हो जाता है. उसको कई बार बोलते हैं वेटलेसनेस. वन फील वेटलेसनेस. दैट इज व्हाट द माइक्रोग्रेविटी कम्स. Mystery of launch vehicle became reality in today's class. Thank you. Okay, thank you. Shivam is saying that. Thank you. Right. So shall we end the class now? Yes, anybody from management, can we stop the class? Yes, sir. Yes, sir. We can. Yeah, okay. Thank you. We'll meet tomorrow at the same time, 2 o'clock. Okay, sir. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Take care. Bye-bye. Thank you.